Okay, am I audible to you all? Yes, Isma, you're audible. Okay. Assalamu alaikum everyone. I'm Basma Tahir, sub-publication sections in charge here at Medico's Aid Society. I'm excited to welcome you all to our first ever Meditech Renaissance Conference. Now, any event requires starting with the blessed words of the Holy Quran. So I'd like to invite Haris Mumtaz Malik, our very own Vice President, for the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا Okay, thank you so much. I'd like to start by saying that Medico's Aid Society is a student-based, non-political welfare organization here at Rawalpindi Medical University, working in the name of selflessness, devotion, and service. We are registered with Social Welfare and Baitul Mal Department of Government of Punjab. Now, I'd like to start our today's event by first of all inviting the President of Medico's Aid Society, Usman Haider, to present the annual report of 2023. Over to you. Assalamu alaikum. I hope I am audible. Yes, bhai, you're audible. Thank you so much. Uh, I am Muhammad Usman Haider, current President, Medicos Aid Society. I will give brief introduction of Medicos Aid Society and last annual working of our Medicos Aid Society. Uh, I will show presentation in short. मंथली रिपोर्ट है एनुअल रिपोर्ट होंगे 2 मिनट पहले तो तुम्हें निकाल देता ये तुम
Medical Aid Society is basically a student-based, non-political, non-profitable organization which was made in 1983 by Dr. Amar Sherwani. At that time, its basic purpose was to collect the blood for the thalassemia patients uh, from the different universities of Rawalpindi and Islamabad. With the time, the Medicos Aid Society changes its working from with further continuing working its from blood to medicine and further finance section. Uh, Now I am going to present you the annual report of Medicos Aid Society. Medicos Aid Society actually working from the last 40 years, as I have mentioned before, from 1983, and here is an inspirational introduction. Is an inspirational quote that I will mention. I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but still I can do something. I do not refuse something that I can do. Do not walk behind us, we may not lead. Do not walk ahead of us, we may not follow. Walk beside us and help us in helping the helpless for us. Next, next, next. And here's our executive members of outgoing panel of panel 2022 and 2023. Medicos Aid Society basically comprises of four major section and uh, one section that organize and maintain all the working of all these four sections. That is general section. The four sections are basically blood section, finance section, medicine section, and publication section. And blood section. Last year, blood sections arranged fresh donors, 204 fresh donors from the RMU students for the emergency cases in the hospitals of Rawalpindi and Islamabad. And we arranged 8 blood camp in last year, which included the blood camps in National Skill University, Watim Medical College, Jamia Rizvia, Wow Medical College, Jamia Gausia Medical College, Gould Graduate College, NUST University, and Zabist University, Shahid Parali Bhutto University. In these total blood camps and total emergency cases, we total collected the blood bags 1997, and that was a very good count. Now I am going forward to medicine section. Basically the working of medicine section include to arrange the medical camps in the peripheries of Rawalpindi and Islamabad in the deserving areas where the which including the criteria of not having the health facilities and poor sanitation systems uh, the medical section further the medicine section further arrange the vaccination camps in the RMU, NTB and OTB campuses of hepatitis B, and medicine section also hold a dispensary in the MS office, which we used to provide the free medicines to the in the emergency cases to the students of RMU and to the staff of RMU, Rawalpindi Medical University. And a medicine section also have the medicine boxes in the hostels of the RMU. Last year, the total number of patients that were treated from the dispensary were 569, and we arranged
two medical camps last year, which include one site of Soroba and other the Kotli Azad Kashmir. In the Soroba camp, we treated the total number of 276 patients, and in the Kotli Azad Kashmir, we treated 622 patients. And next, we arranged last year three vaccination camps in NTB and OTB, which include three doses of hepatitis B vaccinations. And here's some pictures from the medical camps that we arranged and vaccination camps. Now I am going forward to finance section. Finance section basically deals with the finance cases of the for the deserving patients and other maintenance of the societies. Finance section basically look for the deserving cases for the patients who not who cannot arrange the medicines for themselves, and finance section provide them the free medical aids. Next. The total expenditure that we last year was 15 lakh 18,583, and we do some special cases like of 12 lakh 71,725 725, and mean the regular activities we used 2 lakh 46,858. And now I'm going forward to publication section. Publication section basically it do the publication of all the activities that are going on in this society. It majorly cover the it also cover the awareness sessions and awareness programs in different days like thalassemia days and other different days. Publication section also had last year some podcast, one of which was with Dr. Ambreen Akhtar on the negligence prevention and control, and one podcast was with Dr. Mujib Khan with the HOD of infectious diseases in the Holy Family Hospital on World Hepatitis Day. On the RMU Jubilee celebrations in December, the MS arranged a stall on the 6th International Scientific Conference to show and portray its her working his to show his working in the in that stall. The publication section also maintains databases and boards of the different in the offices and in the NTB and OTB campuses. No, the general section. General section basically overlook all these sections and coordinate with all these sections for smooth working of. And that's all from my side. Thank you so much. Thank you so much, Usman. We are now waiting for our first speaker, Dr. Shahzad Ali Khan Sahab. Once he joins, we will continue with the conference. Thank you so much.
We are joined with our guest speaker, honorable guest speaker, Dr. Shahzad Ali Khan. We are at our conference. Sir is one of the most prominent figures in the realms of medical research and public health. I would like to briefly quote a few of Sir's many great services and achievements. Sir is a medical graduate of King Edward Medical College, Lahore in 1991. After MBBS, he did MBA with majors in finance and MS in public health from Quaid-e-Azam University, Islamabad. He is one of the few medical doctors with a PhD in management sciences in Pakistan. He holds Fellowship of Faculty of Public Health from Royal College of Physicians, London, and also holds a Fellowship of Royal Society for Public Health, London. He has 28 years of public health related work experience ranging from peripheral level administration to management of tertiary care health facilities. He carries a vast teaching experience and research experience both at undergraduate and postgraduate level in the field of health financing and project management, systems and policy development, corporate government, health economics, and quality management at national and international level. He has been involved in and has contributed in development of several national and international strategies, policies, working papers, training manuals, and policy paper. His research work extensively disseminated to more than 150 peer-reviewed journals and publications across various fields. He has been involved in development of several national and international strategies, policies, working papers, training manuals, and policy papers. His research work extensively disseminated to more than 150 peer-reviewed journals and publications across various fields. He is currently the Dean and the Vice Chancellor of Health Services Academy, Islamabad, Pakistan. He is also member of Academics Council, Quaid-e-Azam University, Islamabad, member Advanced Studies and Research Board and advisor to Vice Chancellor Rawalpindi Medical University, member of Board of Studies at Pakistan Institute of Development, and visiting faculty at Armed Forces Institute Postgraduate Medical Institute. Member of Board of Studies Health Informatics at ComSats University, Sessional Faculty for Health Financing at Aga Khan University, member of PhD Committee at Khyber Medical University, Faculty of Project Manager Bahrain University, Master Training at the Management Services Wing Establishment Division, Government of Pakistan, visiting faculty of Pakistan Manpower Institute, Government of Pakistan. And these are just a few of such many great achievements and services. Sir, we are quite honored to have you here at our conference. You may proceed with the session, sir. Thank you, Haris. And sorry, everybody, for the delay. Actually, I was traveling and just reached in the office. हारिस, इसमें कोई फॉरेनर्स तो नहीं है ना ज्यादा? हम बाइलिंगुअल हो सकते हैं ना? No, sir. Most Pakistani students हैं इसमें. ठीक है. चलें. Thank you. Today's topic is about public health, medicine, and AI. Yesterday, I was in a panel discussion with a US company who have developed a lot of AI-based solutions for healthcare. So there was quite an interesting discussion, and I will share some of the discussion points which we discussed yesterday. So सबसे पहले अपने जितने हमारे यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं और मेडिकल फील्ड के जितने भी लोग बैठे हैं, उनको एक थोड़ा सा मैं अपडेट कर दूं कि कोविड के बाद से एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है दुनिया में हेल्थ सिस्टम में, जो शायद पाकिस्तान में हमारे हॉस्पिटल्स ने कैप्चर नहीं की या हमारे मेडिकल की कम्युनिटी ने उस तरह से परसीव भी नहीं की, और शायद अगर हम उसको समझ ना सकें या समझें ना तो फ्यूचर में हम और मजीद पीछे रह जाएंगे। मेडिकल की जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है वो लीडर्स हैं दुनिया में। कोविड से पहले की बात करता हूं मैं, तो एक कोविड से पहले दुनिया में टॉप का जो मेडिकल डॉक्टर था, और अभी भी हम अगर क्लिनिकल साइड पे देखें तो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड मेडिकल डॉक्टर इज फ्रॉम पाकिस्तान, और यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह पे। बिसाइड्स इसके कि हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां कह लें या रिस्ट्रिक्शंस, क्या कहते हैं, अनाउंस्ड रिस्ट्रिक्शंस कह लें, वॉर ऑन टेरर कह लें, वट एवर यू मे कॉल, पाकिस्तान का जो जियो पॉलिटिकल और इंटरनेशनल इमेज है वो जितना भी खराब हुआ भी हो,
तो जो मेडिकल डॉक्टर्स थे उनकी डिमांड में कमी नहीं आई इंटरनेशनली। तो इसका मतलब ये है कि हमारे कोविड से पहले हम एटलीस्ट क्लिनिकल साइंसेज में, क्लिनिकल मेडिसिन में दुनिया से पीछे नहीं थे। हम इनफैक्ट वी वर फार अहेड ऑफ मैनी अदर अदर कंट्रीज एंड इवन इन द यूएस जो पाकिस्तानी डॉक्टर था वो हाईएस्ट रैंक पे होता था, और इसी तरह यूके में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह पे। जो मेडिकल की हमारी ट्रेनिंग है या जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है वो इतनी एग्रेसिव होती है, इतनी मैं कहूँगा कि एग्रेसिव के साथ साथ एक्सटेंसिव, और इतना ज़्यादा उसका स्कोप होता है कि दुनिया में शायद कोई इतनी वैरायटी के पेशेंट ना देखता हो जितना हमारे टर्शरी केयर अस्पतालों में हमारा एक मेडिकल स्टूडेंट और फिर हाउस ऑफिसर देखता है। तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज है दुनिया के अंदर। लेकिन कोविड के अंदर जो हुआ उसके बाद दुनिया का जो कंसेप्ट था वो प्रिवेंशन की तरफ, पब्लिक हेल्थ की तरफ, क्योंकि इट वाज अ पेंडेमिक, और पेंडेमिक भी इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। पेंडेमिक हर 100 साल पहले आती रही है, हर हर सेंचुरी में एक पेंडेमिक जरूर आई है, कहीं रिपोर्टेड है कहीं नहीं है। और कुछ पेंडेमिक बिल्कुल 100% कंट्रीज को अफेक्ट करती थी, कुछ सिलेक्टेड फ्यू कंट्रीज को जो शिपिंग से मुंसलिक थे शुरू शुरू में, उनसे सिर्फ उनको पेंडेमिक होती थी। तो लेकिन ये जो कोविड की आई, इसमें चूंकि हमारी फ्लाइट्स और एयर ट्रेवल बहुत ज्यादा है, बॉर्डर ट्रेवल, दूसरा ग्राउंड ट्रेवल बहुत ज्यादा है, शिप के जरिए भी ट्रेवल है, और ट्रेड बहुत ज्यादा है दुनिया में, इसलिए ये बड़ी एग्रेसिवली, बड़ी स्पीड से फैली थी, और तकरीबन तकरीबन पूरे दुनिया के 190 192 मुल्कों में ये पहुंच गई थी, जो कोविड की पेंडेमिक थी। तो अब जो आज जो टॉपिक है हमारा, खासतौर पे पब्लिक हेल्थ, मेडिसिन, एआई और रेनेसांस की आप बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से द बिगेस्ट चैलेंज विच द वर्ल्ड हैज फेस्ड इज प्रिवेंशन को कैसे प्रमोट किया जाए। मतलब हाउ टू गो फॉर अ सोसाइटी वेयर वी हैव अ वेरी अर्ली diagnosis of any outbreak, any epidemic, and how to contain that within that area of union council or village or maybe even a tehsil, and then how to respond to such epidemics। तो ये एक बहुत बड़ा दुनिया के अंदर एक बन गया प्रॉब्लम, और हर मुल्क ने इस पे इन्वेस्टमेंट की है। सो दो मैं आपको वर्ड्स बोलूंगा जो मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स से कहूंगा कि इसके ऊपर जरा मजीद पढ़ लें। इस कोविड से पहले ही तकरीबन बिल गेट्स ने 2012-13 में, आपने ये अक्सर गॉसिप्स भी सुनी है उससे उससे मुतल्लिक और बाकी चीज़ों के बारे में भी, लेकिन उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर का इस्तेमाल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये प्रिडिक्ट किया हुआ था कि अब जो ग्लोबल एपिडेमिक आएगी वो पेंडेमिक में कन्वर्ट हो जाएगी, और वायरस नए किस्म के, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड मैनी अदर इश्यूज, हमें कंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। सो इसको हम कहते हैं ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा। तो हैरानगी की बात है कि ये कोविड के बाद ज्यादा प्रमोट हुआ, लेकिन ये वर्ड हमने कोविड से पहले सुना हुआ था, और बिल गेट्स ने और बाकी बहुत हाई लेवल के जो हमारे टेक्नोलॉजी के गुरुज हैं उन्होंने ये बोला हुआ था। तो वी हैड दिस ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा एज अ टॉप एजेंडा ऑफ द वर्ल्ड टू प्रिवेंट एंड आइसोलेट any outbreak, any epidemic in the area, and to prevent its ट्रांसफर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। इस पे बात हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद सारी प्रिपरेशन, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट और सब चीज़ों के बावजूद कोविड ऐसे फैला कि जैसे कोई हमने इंतज़ाम किया ही नहीं हुआ था, हमें बिल्कुल बेबस करके। तो इस पे मजीद परेशानी हुई तमाम दुनिया को कि ये मतलब ऐसा क्यों हुआ, हालांकि हम तो पिछले 5-7 सालों से, एटलीस्ट 2015 से तो मैंने सुना हुआ था, 14-15 से ये ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा और कंटेनमेंट ऑफ इन्फेक्शन एंड पेंडेमिक प्रिवेंशन, ये दुनिया में इसकी बात हो रही थी। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि बहुत सारी वायरसेस जो हैं वो म्यूटेट भी हुए हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे जो वेक्टर्स भी हैं उनके, वो भी मुल्क मुख्तलिफ दुनिया में पहुंच गए हैं। जिस तरह डेंगू की मिसाल आपके सामने है, पाकिस्तान में 2005-6 से पहले हमने कभी कभी सुना था डेंगू का, और अभी हर साल सुनते हैं। इसी तरह और भी बीमारियां हैं जो वेक्टर बॉर्न हैं, या ऐसी वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, प्रोटोजोआ, इनसे बहुत ज़्यादा बीमारियां हमारी कॉमन हुई हैं। सो दी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा, एक इसके ऊपर मैं कहूँगा स्टूडेंट्स को कि ज़रूर इसको पढ़ें। गूगल के ऊपर भी है, डब्ल्यूएचओ के अंदर भी है, बिल गेट्स की जो बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है उस पर है, यूएन के बहुत सारे यूएनडीपी के, इस सब वेबसाइट्स के ऊपर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा की डिटेल दी हुई है। ये हमारे डॉक्टर्स को पता होना चाहिए ये क्या है और इसको कहते क्या हैं और इसमें क्या क्या एक्शन हैं जो हमें करने हैं, पाकिस्तान ने क्या करने हैं।
हम कंट्रीज की जॉइंट एक्सटर्नल इवेल्युएशंस करते हैं जाके। मतलब एक इंडिपेंडेंट कमेटी और टीम होती है WHO की, UN की, वो कंट्रीज में जाके दे डू द इवेल्युएशन ऑफ हाउ गुड द सिस्टम ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी इज देयर इन दैट कंट्री। पाकिस्तान की इसी साल हुई है, अभी फरवरी में मेरा ख्याल है हमारे साथ हुई थी। WHO की टीम आई थी और इंटरनेशनल टीम आई थी और पाकिस्तान की टीम हेल्थ मिनिस्ट्री की भी थी। सो जब आपको ये डॉक्टर्स को ये पता नहीं होगा तो फिर इंटरनेशनली उनकी जो एक वैल्यू है ना उसमें खासी कमी होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एजेंडा है मेडिकल में और क्लिनिकल में और हेल्थ में जो डॉक्टर्स को पता होना चाहिए। सो दिस इज ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा, जिसमें टेक्नोलॉजी, AI और सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और कंट्रीज जो हैं उनकी जॉइंट एक्सटर्नल इवेल्युएशन, JEE आप लिखेंगे तो उसका भी आपको टूल्स वगैरह मिल जाएंगे। सो जॉइंट एक्सटर्नल इवेल्युएशन की जाती है, पाकिस्तान की रिसेंटली हुई है, एंड देन दे स्टार्ट टू इवेलुएट कंट्रीज के उसमें किस चीज़ की कमी है विद रेफरेंस टू ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा। और ये सब कुछ इज अ पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल इट एज IHR, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस। ये भी पहले से थी कोविड के, लेकिन अभी कोविड के बाद ये मज़ीद स्ट्रिक्ट हो गई हैं और मज़ीद लोगों को इसके ऊपर फोकस है कि हमने कैसे इंटरनेशनल हेल्थ की रेगुलेशंस को टाइट करना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है। सो IHR और GHSA, आई विल सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू टॉक टू लर्न दीज थिंग्स। एंड इफ क्योंकि ये इसके ऊपर बात होगी जब भी ये कभी इंटरव्यू भी देंगे या कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे, इंटरनेशनल इदारों के साथ बात करेंगे जॉब्स के लिए, या अपने आप को किसी पैनल में प्रेजेंट करेंगे किसी भी जगह पे, तो देयर मे बी अ क्वेश्चन अबाउट दैट, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ पोस्ट कोविड इरा। अगले 10 साल तक कम से कम हम कोविड की बात करते रहेंगे और इन्हीं चीज़ों की बातें करते रहेंगे। ये एक तो अब हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, जो हमारी पब्लिक हेल्थ है, हमारी मेडिसिन है, इसमें हुआ क्या है पोस्ट कोविड। एक तो मैंने बात की ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा और IHR की, ये तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस हैं UN बॉडीज की, WHO की, और कंट्रीज पे बाइंडिंग है बहुत सारी, हमें ये साइन करनी पड़ती हैं और हमें इनका ख्याल करना पड़ता है। मेडिकल की कम्युनिटी में क्या हुआ है, हमारा शिफ्ट हो गया है ट्रीटमेंट और क्लिनिकल, जो कहते हैं ना क्योर, केयर, मैनेजमेंट और पोस्ट डिजीज, जो हमारा फिलॉसफी थी सारी, पूरे का पूरा सिस्टम डिजीज होने के बाद गियर अप होता था, एक्टिव होता था। नाउ एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन एंड इवन वन स्टेप बिहाइंड विच इज नोन एज वेलनेस। सो आज का जो फिलॉसफी है दुनिया की, वो टारगेटेड है टुवर्ड्स द हेल्दी। तो बड़ा सिंपल सी फिलॉसफी है। पहले जो हमारी मेडिकल कम्युनिटी की फिलॉसफी थी या सिस्टम था, हेल्थ सिस्टम था, वो टारगेटेड था टुवर्ड्स द डिजीज। बीमारी हो गई, अब हमने इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करना है, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट, एंड हाउ वी कैन ट्रीट हिम और हर इन द बेस्ट मैनर, लीस्ट कॉस्ट मेथड के जरिए, कम से कम पैसों में कैसे इसका इलाज हो सके, जल्द से जल्द कैसे ठीक हो सके। ये फोकस था ना हमारा पहले। अब ये फोकस थोड़ा सा चेंज हो गया। हमारे पास तो खैर अभी तक वही है, बदकिस्मती से हमारा अभी वो डिजीज मॉडल है। डिजीज होगी तो हम कुछ करेंगे, वी आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट प्रिवेंशन एंड प्रमोशन। दुनिया जो है वो तकरीबन सारी डेवलप्ड कंट्रीज वो मूव कर गए हैं टुवर्ड्स हेल्थ प्रमोशन और प्रिवेंशन की तरफ, और इसके लिए एक वर्ड वो यूज करते हैं, वो हेल्थ एंड वेलनेस या वेलनेस कहते हैं इसको। व्हाट इज दिस? दिस इज समथिंग टू डू विद enhancing the level of health in which you are today। मतलब बीमारी का, आपने अगर कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर्स ने पढ़ी हो तो उसके अंदर एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होती है कि जब बिल्कुल बायोकेमिकल लेवल के ऊपर बॉडी में अभी सिम्टम भी नहीं आए, साइन भी नहीं आए, तो कोई ऐसी प्रिवेंटिव टेक्निक यूज करना कि वो जो उसकी बिगिनिंग है डिजीज की, उसी के लेवल पे हम इंटरवीन कर लें और उसको ना होने दें। सो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हेल्थ प्रमोशन और वेलनेस। सो दुनिया इस वक्त जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स wellness philosophy, and where they target every individual of the country, they don't look for the diseased only। सो अगर मैं पाकिस्तान में वेलनेस के ऊपर या प्रिवेंशन और प्रमोशन के ऊपर, खास तौर पे हेल्थ प्रमोशन पे काम नहीं करूंगा, और मैं इसी तरह जिस तरह मेरा आज हम डॉक्टर सारे कर रहे हैं कि वी वेट फॉर द डिजीज टू मे बी अपीयर एंड मे बी गेट कॉम्प्लिकेटेड इवन, क्योंकि पेरिफेरी से जब हम पेशेंट भेजते हैं तो वो जो सिस्टम का, हम इसको अक्सर, और इसमें प्रॉब्लम ये है, आप और मैं, हम सब डॉक्टर्स जो हैं वो हमेशा इसको
मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं पेशेंट को, बी से वो लेट आया था, या उसको अवेयरनेस नहीं थी, या उसको पता नहीं था, उसने डिले किया. वी ऑफन blame the patient for delay and all these things. But if someone is living in a rural area, village, और उसको इतने ज़्यादा लेटेस्ट बीमारियों के कोई सिम्टम नहीं पता, ना उसको कभी किसी ने न्यूट्रिशन काउंसलिंग की है, ना मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग हुई है, ना उसको एमएनसीएच या चाइल्ड हेल्थ की या मदर हेल्थ की कोई एडवाइस किसी ने प्रॉपर दी है, और वो टैबूज पे और कल्चरल सिस्टम में रह रहा है, तो डेफिनेटली उसको, आई डोंट थिंक वी कैन ब्लेम एनीवन फॉर लैक ऑफ नॉलेज इफ वी हैव नॉट प्रोवाइडेड enough knowledge, and in fact we have provided the wrong knowledge or wrong information to him or her. तो फिर वो जब टर्शरी केयर में पहुंचते हैं तो फिर हम उन्हें ब्लेम करते हैं, विच इज़ रॉन्ग. तो हमारा जो मॉडल है वो डिजीज़ बेस्ड है, और डिजीज़ के अंदर भी डिलेड है और काफ़ी ज़्यादा अर्बन सेंटर्ड है. सो पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है, इट इज़ प्रो क्यूरेटिव. प्रो क्यूरेटिव का मतलब है वी आर गियर्ड टुवर्ड्स ट्रीटमेंट, एवरीबॉडी इज ट्रेन्ड इन ट्रीटमेंट, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, टेस्ट कौन से कराने हैं और ट्रीटमेंट क्या करनी है, दैट्स इट. वी डोंट डू रिसर्च और डू एनीथिंग अबाउट हाउ टू प्रिवेंट दैट डिजीज, because we are dependent on many factors outside medical community for prevention in the household, in the community, and outside the hospital. वो हम करते नहीं है काम कभी, और ना ही कोई ऐसी फोर्स है जो इस तरह से काम करे. तो जो हम प्रो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट फोकस्ड है. दूसरा, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो प्रो अर्बन है. हमारा सारे का सारा हेल्थ सिस्टम आप देखें तो हमारे सारे अच्छे अस्पताल और अच्छे सेंटर सिर्फ शहरों में होते हैं, जबकि 66-67% आबादी हमारी गांव में है. इसका मतलब मेजॉरिटी जहाँ पे है वहाँ तो हेल्थ सिस्टम ही नहीं है. जहाँ थोड़े लोग रह रहे हैं वहाँ पे हेल्थ सिस्टम है, और वो उन लोगों को गांव से आना पड़ता है शहर की तरफ ट्रेवल करके, और एक ह्यूज प्रॉब्लम है एक्सेस का, डिलेस का और इन चीज़ों का. और तीसरा जो है हमारा हेल्थ सिस्टम इज प्रो क्यूरेटिव, प्रो अर्बन एंड प्रो रिच. So if you have money, you can afford anything in Pakistan. There is no dearth of, no lack of good skill, good technology, good medicine. Everything is available to the rich. आप दुनिया का बेस्ट, कहते हैं ना ट्रीटमेंट, बेस्ट क्या होता है वो जो एक प्रोसीजर, बेस्ट मेडिसिन विद इन फ्यू आवर्स अवेल कर सकते हैं इफ यू हैव मनी इन योर पॉकेट. सो आवर सिस्टम इज प्रो क्यूरेटिव, प्रो अर्बन एंड प्रो रिच. पुअर के लिए, रूरल के लिए और प्रिवेंशन के लिए वी आर वेरी वेरी बैड, जबकि दुनिया जो है वो इस पे चली गई है हेल्थ प्रमोशन पे. सो आई वाज टेलिंग यू दैट द न्यू फिलॉसफी इन मेडिसिन इज दैट डॉक्टर्स एंड ऑल द public health and health community, they should try to enhance the level of health of the people instead of waiting to get diabetes, hypertension and various infections and then treat those. So community level पे, स्कूल लेवल पे इंटरवेंशन आ गई हैं लोगों की. बच्चों को न्यूट्रिशन की काउंसलिंग, थोड़ी सी सख्ती, थोड़े से प्यार से उनकी डाइट बेहतर करना, फिर उनको ग्रो करने में मदद करना. मुख्तलिफ किस्म के लोग यूज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म की सप्लीमेंट्स यूज़ हो रहे हैं दुनिया में टू इन्हेंस द लेवल ऑफ हेल्थ. चाइना के ज़माने के बारे में आज से 20 साल पहले कहते थे कि सारे छोटे छोटे कद के होते हैं और बड़े छोटे से होते हैं. चाइनीज़ के का हमारे जहन में इमेज ही कुछ और था. आज आप जाएं तो बिकॉज ऑफ दीज वेरी गुड समटाइम हार्मोन्स एंड समटाइम अदर नेचुरल रेमेडीज यूज़ करके उन्होंने बच्चों को, माओं को और वो जो अडल्ट हैं उनकी फिटनेस और उनकी हाइट और हर चीज़ पे इतना ज़्यादा जनरेशन को इम्प्रूव कर लिया है कि वो बहुत फिट और बड़े एक्टिव और बॉडी, मैं कहूँगा कि हेल्दी नेशन बन गए हैं एक सिक नेशन से विद इन लास्ट फ्यू डेकेड्स. इसी तरह सारी स्कैंडिनेविया, सारा आपका यूरोप जो है वो फोकस्ड है टुवर्ड्स वेलनेस. तो वेलनेस का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है पब्लिक हेल्थ में, कि आपने रिसर्च ऐसी करनी है कि कौन सी पॉजिटिव एजेंट्स हैं, उन पॉजिटिव एजेंट्स को एड्रेस करना है, अवेयर करवाना है लोगों को, और फिर आपने ऐसी स्ट्रेटजीज बनवानी है कि जो कम्युनिटी लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे और हॉस्पिटल लेवल पे, चारों लेवल्स के ऊपर डिफरेंट किस्म की इंटरवेंशंस करके लोगों को हेल्दी रखा जाए, बल्कि उनकी हेल्थ को पहले से बेहतर किया जाए. इसमें न्यूट्रिशन का भी बड़ा रोल है, फिजिकल फिटनेस का बड़ा रोल है, और मेंटल हेल्थ का, तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और डेफिनेटली जीपी क्लिनिक्स जो होते हैं, हमारे जीपीज हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है इसके अंदर. एंड वी अनफॉर्चुनेटली, आई थिंक जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं पैनल के में भी और बाहर भी, दे में एग्री कि हम इस पे पाकिस्तान में बड़ा मिनिमल काम हो रहा है इसके ऊपर. और उसकी दो वजूहात हैं. एक, कि हमारा जो डॉक्टर है वो इतना बिजी है बेचारा
ट्रीटमेंट के अंदर कि उसको ट्रीटमेंट के अंदर भी एक वक्त में इतने पेशेंट देखने पड़ते हैं कि वो एसओपीज अपने पूरे नहीं कर सकता क्वालिटी के। तो ऑलरेडी ओवरबर्डन मेडिकल कम्युनिटी को हम वेलनेस पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो जान बचाने में लगे हुए हैं। हम कैसे उसको इमरजेंसी से या वार्ड से या कहीं से हटा के तो वेलनेस की तरफ लेके आएंगे, बिकॉज ही इज ऑलरेडी ओवरबर्डन। तो इसका मतलब है वी नीड अ वेरी स्पेशल फोर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, एक सेपरेट फोर्स को क्रिएट करना, पब्लिक हेल्थ में ट्रेन करना और उनको यूज करना वेलनेस पे। दैट इज द स्ट्रेटजी विच वी आर डूइंग। और दूसरी जो वजह है, एक तो ये हो गई वजह कि हम लोग ट्रेन नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है और हम बिजी हैं लाइफ सेविंग में। तो दूसरी तरफ डिमांड नहीं है कम्युनिटी में। हमारी जो कम्युनिटी है ये हेल्थ अवेयर कम्युनिटी नहीं है, हेल्थ कॉन्शियस कम्युनिटी नहीं है। आज भी आप सर्वे करें पाकिस्तानियों का और उनसे ये पूछने की कोशिश करें कि आपकी जो बेस्ट या फर्स्ट चॉइस या फर्स्ट विश क्या है, इट विल नेवर बी गुड हेल्थ। अब अगर आप पाकिस्तानी की विश लिस्ट लेना कि आप क्या चाहते हैं, कोई भी अच्छी सेहत या सेहत को टॉप 10 में इवन नहीं करेगा। हमें पैसे चाहिए, हमें माल चाहिए, घर चाहिए, शोहरत चाहिए, पावर चाहिए, ठीक है ना, मुख्तलिफ किस्म की। और कुछ मामलात में तो बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं हमारी। तो एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, वी डोंट वैल्यू गुड हेल्थ और हेल्थ एज अ वेल्थ। हमें वेल्थ ही वेल्थ लगती है, हेल्थ हमें वेल्थ नहीं लगती। तो ये एक इशू है जिसकी वजह से डिमांड इज़ वेरी बैड, वेरी लो फॉर हेल्थ। हमें बिजली की, गैस की, नौकरी की, इकोनॉमिक्स की और बहुत सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बट हेल्थ इज़ नॉट, मोस्ट केसेस में नहीं है। तो उसकी वजह से फिर ये होता है कि हमारी जो इंटरवेंशन है वो पास नहीं हो सकती, वो वो हो नहीं सकती कामयाब, क्योंकि डिमांड नहीं होगी जब कम्युनिटी में, या पार्टिसिपेशन नहीं होगी कम्युनिटी की, तो आप किधर से कामयाब हो सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। दोनों सूरतों पे ये। और तीसरा अगर है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने वेलनेस पे क्या करना है उनको भी उस तरह से नहीं पता। और हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ की लीडरशिप भी नहीं है उस तरह से। वी आर वेरी गुड इन क्लिनिकल मेडिसिन, वी हैव प्रोफेसर्स, वी हैव very high level officials, well trained in medicine and different specialties of health. But in public health we have very few limited people who know public health and they can talk, or maybe they can do something about it, and they do not have a power to influence the policy maker yet. तो हमारे पास अभी भी जो क्लिनिशियन है वो इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसी मेकर्स को, क्योंकि वो उसका फिजिशियन होता है या उसका क्या कहना चाहिए नॉलेज होता है इन द नीड, इन टाइम ऑफ नीड। तो ये एक इशू है कंट्री का। अब आ जाए जो हमारा तीसरा पार्ट है आज की टॉक का, विच इज़ एआई। एआई से पहले मेडिकल टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी यूज़ की बात कर लें तो डिजिटलाइजेशन हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में तो हुई है। सॉफ्टवेयर्स बने हैं, सिस्टम्स इंस्टॉल हुए हैं ऑटोमेशन के, कंप्यूटराइज्ड फिजिशियन ऑर्डर एंट्री हो गई है, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बन गए हैं हॉस्पिटल्स में, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड्स बन गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। आप जाएं किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एमआर नंबर से लेके आपकी डिस्चार्ज स्लिप तक सब ऑटोमेटेड निकलती है। आपको हर चीज़ जो है उसके अंदर कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी डेफिनेटली यूज़ होती है। लैब में टेक्नोलॉजी है, डायग्नोस्टिक्स में, ट्रीटमेंट में, वार्ड्स में, हर जगह मशीन्स जो हैं वो ऑटोमेटेड हैं। सो वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एज फार एज disease control, disease management is concerned, but we are not using this technology in prevention or in health promotion, which is a gap. दूसरी बात आप कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस इट इज़ देयर, इट इज़ हेयर, एंड ये हमारे हाथों में जो मोबाइल फ़ोन है ये भी सारी एआई बेस्ड है। एंड्रॉयड हो या आईओएस हो, ये यूज़ करते हैं एआई आपकी सर्च हिस्ट्री देख के, आपकी कॉल्स देख के, मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन आपके जो फ़ोन में आप डालते हैं उसको ये यूज़ करती है आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट के लिए। आपको मैं अभी मजाक मजाक में भी, अगर आप कभी आपस में फ़ोन अपने पास रख के ना किसी टॉपिक में, आपको एक मतलब एक टिप दे दूं कि आप अगर अपने के फ़ोन पे बैठे हैं, फ़ोन अपने पास रखा है, दोस्त बैठे हैं और वो किसी एक टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, आप अपने फ़ोन खोलेंगे, थोड़ी देर के बाद आपको सजेशंस आना शुरू हो जाएंगी फेसबुक पे या गूगल पे उस चीज़ के बारे में जो आपने डिस्कस की होगी। तो ये जो गैजेट हमारे हाथ में है ये सुनता भी है, देखता भी है और आपको फॉलो करता है, और आपकी हिस्ट्री से और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो ये लेता है कॉल्स के ज़रिए और बाकी जगह। हम समझते हैं शायद हमारी कॉल्स प्राइवेट होती हैं, दे आर नो मोर प्राइवेट। हमारी जो सर्च हिस्ट्री है वो भी प्राइवेट नहीं है। मैनी कंपनीज दे पे these search engines and these call cellular companies
to get information about what the consumer wants, what they are talking about, and so then they use this as an artificial intelligence के तौर पे use करके वो आपको suggestions देते हैं. तो ये तो बहुत छोटे लेवल की चीज़ है. बाकी अगर आप देखें हेल्थ के अंदर, तो हम जो फ्यूचर की प्रिडिक्शंस हैं, हमारे जो मॉडल्स बनते हैं कि कहाँ बीमारी होगी, कौन सी होगी, ये इज ऑल बेस्ड ऑन एआई. तो जो हम कल, मैं आपको मिसाल दूं, जिस हम कल एक डिस्कशंस कर रहे थे, एक यूएस की कंपनी है उसके साथ कि पाकिस्तान में हमने कुछ इंटरवेंशंस करनी है हेल्थ में, वेलनेस में भी और डिजीज कंट्रोल में भी. तो दे वर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मटेरियल्स, मैपिंग कैसे होगी, किस तरह प्रिडिक्शन होगी, सिम्टम आप बोलेंगे, सिम्टम जस्ट बोलने से और सिस्टम में एंटर करने से ऑटोमेटिकली वो डिजीज डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकाल देगा, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बेस पे वो डिफरेंट ऑप्शंस भी ट्रीटमेंट की दे देगा. सो फ्यूचर का जो डॉक्टर होगा वो मशीन ऑपरेटर होगा मोस्ट प्रोबेबली. वो एक छोटा सा टैब या मोबाइल फ़ोन के ऊपर सिस्टम की इंफॉर्मेशन पेशेंट की डालेगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसको सिमुलेशन देगा कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ये करोगे तो ऐसे होगा, ये करोगे. तो अपना दिमाग कम से कम इस्तेमाल होगा, हाथ और आंखें ज़्यादा इस्तेमाल होंगी गैजेट के ऊपर. This our kids, our school children, our college student have to learn, and when they enter into the medical school, they must already know what type of various softwares are there for artificial intelligence in health. और फोकस करें थोड़ा सा इसको अपने प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन की तरफ, क्योंकि दुनिया जो है वो फ्यूचर में प्रिवेंशन और प्रमोशन मॉडल पहले अडॉप्ट करेगी, और फिर भी अगर किसी को बीमारी होगी तो फिर उस बीमारी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करेगी. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में, जो हमने कल डिस्कस की, 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी या यूज़ ऑफ एआई क्यों कम है पाकिस्तान में? बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, इसकी डिमांड नहीं है, इसलिए कि डॉक्टर कंफर्टेबल नहीं है मशीन की बात मानने में. अभी तक इस लेवल पे नहीं पहुंचे कि हम ये कह सकें कि मशीन मेरे से ज़्यादा काबिल है. हमारा जो टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसने 16-14 गोल्ड मेडल लिए होते हैं, वो ये बिलीव नहीं करता कि जो ये फ़ोन है या जो मेरे पास सिस्टम है इसको मुझसे ज़्यादा पता होगा, और वो अपनी नॉलेज पे ज़्यादा एतबार करते हैं. तो पेशेंट केयर के अंदर वी रेयरली यूज़ दिस मॉडल ऑफ एआई. तो जो यूज़र हुआ इसका एक यूज़र, वो तो आपका डॉक्टर है. सो डॉक्टर्स में डिमांड नहीं है एआई की अभी तक. आप सर्वे करें तो आपको पता चलेगा, वो कहेंगे नहीं यार, जो कन्वेंशनल तरीका है, ट्रेडिशनल, दैट इज़ द बेस्ट, एंड वी मस्ट नॉट बी यूजिंग दिस. अभी अभी तक मुझे तो अपने पे एतबार है. सो करते हैं यूज़, बट बहुत थोड़ा. दूसरा जो एआई है, वो जो आपका दूसरी साइड पे बैठा है बंदा, डॉक्टर की पेशेंट, वो भी मशीन के ऊपर एतबार नहीं करता. मैं डिजिटल हेल्थ की बात करूं, टेली मेडिसिन की बात करूं, टेली हेल्थ, टेली साइकेट्री, टेली जो आप मेडिसिन करते हैं, ओपीडी करते हैं, उसके अंदर भी जो पेशेंट बैठा है ना एक तरफ, वो फील नहीं करता इम्पोर्टेंट अपने आप को, क्योंकि वो ये कहता है ये मशीन में, स्क्रीन में देख के मैं बातें कर रहा हूँ, पता नहीं डॉक्टर को मेरी बीमारी समझ आएगी कि नहीं आएगी. तो अभी तक हम टेली मेडिसिन, टेली हेल्थ में पेशेंट भी उतना कंफर्टेबल नहीं होता. हालांकि हमने कोविड में बहुत यूज़ किया, लेकिन जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ तो वो टेली मेडिसिन का यूज़ फिर से कम हो गया. तो अभी पेशेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू द मशीन एंड टॉकिंग टू अ डॉक्टर थ्रू अ मशीन. उनकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन बेहतर होगी तो शायद इसका काम बढ़े. नहीं तो पाकिस्तान में अभी तक ऑनलाइन कंसल्टेशन आर वेरी लो. वी कैन इजीली टेक एन ऑनलाइन कंसल्टेशन, इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ इकोनॉमिकल, ट्रैवलिंग बचती है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है. बट स्टिल पीपल विल स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ इन ट्रांसपोर्टेशन, इन प्राइवेट कार्स और वेरियस काइंड ऑफ ambulances, and they will not seek online consultation of an expert. अनफॉर्चुनेट है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल हेल्थ के ज़रिए हम कर सकते हैं, लेकिन डिमांड का बड़ा इशू है. डॉक्टर भी नहीं मानता, पेशेंट भी नहीं मानता. और तीसरा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू इसके अंदर ये है कि किसी भी इकोनॉमिक्स के मॉडल में प्राइसिंग और जो फाइनेंशियल उसका है ना इंसेंटिव, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हमारे यहाँ पे पेशेंट से पैसे लेना ईज़ी है अगर आप उसको नब्ज़ पकड़ेंगे, थोड़ी देर उसके साथ बातचीत करेंगे, उसको चेक करेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे, बीपी चेक कर लिया, मुख्तलिफ़ किस्म के आप वो क्लिनिकल मेथड यूज़ करके उसको एग्ज़ामिन करके जब आप कहते हैं कि जी आप ₹100 दे दें, ₹200 दे दें, कंसल्टेशन फ़ीस है, तो वो बड़ी खुशी-खुशी दे देगा. ऑनलाइन 5-7 मिनट में आपने उसकी हिस्ट्री सुनी और उसको कुछ बगैर फिजिकल टच किए आपने उसे कहा जी आप 500 दें या 200 दें या 100 दें, तो वो जो प्राइसिंग मॉडल है वो कामयाब नहीं होता. सो एक तरफ तो दोनों तरफ डिमांड डॉक्टर की नहीं है, दूसरी तरफ डिमांड
पेशेंट की नहीं है, और तीसरी तरफ प्राइसिंग मॉडल इसका अच्छा नहीं बन रहा, इंसेंटिव नहीं बन रहा फाइनेंशियल। मैंने कल उनको यही कहा कि आप इसके बारे में सोचें कि इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट हो और प्राइसिंग मॉडल में बहुत कम पैसे रख के ऑनलाइन के यूज़ को और एआई के यूज़ को हम बेहतर करें, तो शायद कुछ बात बने फ्यूचर में। So the issue of AI, which is there, the clinician still have a doubt. वो कहते हैं पता नहीं अब इसकी बेस पे अगर मैंने किया तो पता नहीं क्या होगा। दूसरा, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई भी। तीसरा, वो खुद को थोड़ा सा हमारे यहाँ अंडरमाइन नहीं करना चाहते कि यार हम कैसे ये अपने आप को इतना नालायक साबित कर दें कि हमें ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी इससे लेना है और ट्रीटमेंट भी इससे पूछनी है। तो दे गो बैक टू द ओल्ड स्कूल मेथड, बुक खोलना और उसमें से देखना। लेकिन अभी गूगल का यूज़ ज़्यादा हो गया, विच इज़ मोर डेंजरस। सो आप एआई का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ ना करें। आप जो प्रॉपर एक डेवलप्ड टूल्स हैं एआई के हेल्थ में, वो आप ना करें। और आप जो हैं वो गूगल में क्वेरी लिख के हाउ टू ट्रीट दिस एंड दैट, और ऐसे से जंक आंसर आए और आप उसको फॉलो करेंगे तो यू विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। सो जो, क्योंकि वो जेनेरिक गूगल के अंदर जो उसके आंसर मिलते हैं, नॉट ऑल द आंसर्स आर करेक्ट, बिकॉज वो एक सर्च इंजन है, वो कोई किसी ऑथेंटिसिटी के ऊपर नहीं लोगों को रैंक करता। जो थोड़ी सी पुश टेक्नोलॉजी यूज करके पेमेंट करके जो लोग अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो चीज़ वो गूगल में ऊपर आ जाती है सर्च इंजन्स में। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये डॉक्टर्स हमारे अभी काफ़ी हद तक इसको उस तरह से प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सक रहे सॉफ्टवेयर्स को। इसके ऊपर हम एक छोटा सा कोई डेमोन्स्ट्रेशन या कोई ट्रेनिंग करवाएं रेगुलरली मेडिकल कॉलेजेस में। सो आई होप कि वी विल बी एबल टू मेक सम इम्पैक्ट। बाकी इट इज़ अ फैक्ट दैट even if you don't like it or if the patient don't like it, in coming years, next 5 years, I will say technology will take over the humans in most of the departments of medicine and health, and everybody will be bound to use technology in the future. Over to you, Haris. Thank you. Any questions, then I'm available. Thanks a lot, sir, for such a wonderful lecture. And of course, we will implement your advices with full zeal and zest in our future. And we will also make sure to invite you for future sessions as well. Over to you, Bisma. Thank you, sir, for taking time out of your extremely busy schedule. We're extremely grateful to you for enlightening us with your extremely valuable knowledge. Medicos Aid Society will forever be grateful to you, sir, and are honored to have you again in our future sessions as well. Now we're going to move to our second session today on stroke by Professor Dr. Husnain Hashim. Now, Professor Dr. Husnain Hashim his qualifications include MCPS, FCPS, FEBN, and MSc in stroke medicine from Danube University, Austria. He is working as a consultant neurologist and a stroke specialist at Fauji Foundation Hospital. He is also the head of department at the Fauji Foundation Hospital. Sir has also worked as stroke specialist at Rashid Hospital, Dubai. We're honored to have you with us today, sir. You may please continue with your session.
You may start, sir. Thank you, sir, for joining us. Assalamu alaikum, sir. Can you hear me? आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। Yes, sir. Yes, sir. आपकी आवाज आ रही है, sir. जी जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं यार अभी मैंने आपको ज्वाइन किया है, पहले एज ए अटेंडी ज्वाइन कर रहा था, तो मुझे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन डॉक्टर शहजाद की हो रही थी, वो तो मैं थोड़ी सी सुनी है। एंड जस्ट लेट मी नो व्हेन कैन आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। Sir, you can start now, sir. अब आपका ही सेशन है, sir. ठीक है ठीक है। अच्छा, ये okay, I have two presentation and I will try to finish within maybe a 30 minute or 40 30 to 45 minute. तो दो प्रेजेंटेशन है जो बेसिकली आई वांट टू नो के जो ऑडियंस हैं बेसिकली दे आर मेडिकल स्टूडेंट रेजिडेंट एंड सो दैट्स आई शुड be give a presentation regarding the basic of stroke and because there is a lot of revolution in the stroke, so I have to keep my extent of presentation to the level of the resident हैं या क्या है, ठीक है ना? So I will start my presentation. My name is Dr. Hasnain Hashim, and I'm associate professor and head of neurology department and stroke center in Fauji Foundation Hospital. So can you share your slides, or should I just start my giving presentation, or you can share my slide on? Is it possible? Sir, you may send them over to me. If you can share the screen yourself as well, if you'd like to do that. Otherwise, you can send them to me and I'll share the screen for you, sir. Whatever you prefer. Okay, let me send it to you, the presentation. Okay. Sir, the screen is the screen visible now, sir? जी, आपको मैंने व्हाट्सएप किया है, आपको व्हाट्सएप किया है। हेलो। Yes, sir. जी, I've आपको मैंने started the व्हाट्सएप कर दी है। presentation, sir.
सर मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया सर। Sonic sir, जी am जी I जी audible? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये क्लिनिक। So this is my first presentation. So it's basically in this presentation we'll discuss about the basic what is clinical spectrum of stroke, कि stroke basically है क्या, और stroke को हम कैसे differentiate कर सकते हैं किसी और भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से या नॉन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से। स्ट्रोक डिस्कस करना इसलिए भी जरूरी है कि स्ट्रोक बेसिकली दैट काइंड ऑफ जो होती है इमरजेंसी, जो कि बिल्कुल टाइम बाउंड है। देखें, बॉडी का कोई और हिस्सा वेट कर सकता है, मसल, हार्ट, किडनी, लिवर, तो द ब्रेन इज दैट ऑर्गन। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो जाए, दे कैन नॉट वेट। एक एक सेकंड मैटर करता है, एक एक सेकंड में आप लाखों सेल जो होते हैं वो लूज कर रहे होते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में जिस तरह किसी जमाने में आप जो होती है हार्ट केयर को, या जो होती है एक्यूट कॉर्नी सिंड्रोम को, या जो आपने किसी भी कार्डिक इमरजेंसी को ज्यादा समझा जाता था, तो हार्ट भी बिल्कुल जो होती है अब ब्रेन उससे ज्यादा इसको इम्पोर्टेंट समझा जाता है। क्योंकि कार्डिक का पेशेंट अगर सरवाइव कर जाए फिर भी उसकी जो होती है कम से कम जिंदगी में काम करने के काबिल हो जाता है। लेकिन अगर स्ट्रोक का पेशेंट, उसको प्रिवेंट करना इसलिए जरूरी है कि पेशेंट विद स्ट्रोक इवन इफ ही सर्वाइव, जो होती है अगर डिसेबिलिटी के साथ सर्वाइव करता है तो वो ना तो काम करने के काबिल रहेगा, उसके इतने प्रोफेशन होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। तो विल डिस्कस हियर एज ए फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ आवर presentation, that is what is clinical spectrum of stroke. Okay, so next slide, can Sama, can you just move to the next slide? Okay, so in this presentation we'll discuss about the epidemiology of stroke and what is the burden of stroke. Actually हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रोक की एपिडेमियोलॉजी स्पेशली एशियन कंट्री और रिसोर्स लिमिटेड कंट्री में कितनी जो होती है वो ज्यादा है, और कितनी ज्यादा इसको इग्नोर किया जा रहा है। स्ट्रोक सब टाइप्स क्या हैं, विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक एंड देयर प्रेजेंटेशन, and how to differentiate between stroke and non-stroke presentation, and how to recognize the site of stroke। stroke हुआ उसको किस जगह का स्ट्रोक हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि ये स्ट्रोक है या नहीं है। बहुत से पेशेंट आपके पास एज ए रेजिडेंट, एज ए हाउस ऑफिसर, एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिशियन, एज ए कंसल्टेंट आपके पास ऐसे पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं दैट present with weakness that is basically depends upon the time. That is, so definition of stroke is a sudden onset of focal neurological deficit due to the interruption of the blood supply to the any area of the brain। ये बड़ा जरूरी है, ये दो लफ्ज जो मैंने स्पेशली हाईलाइट किए हैं, सडन ऑनसेट एंड फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। एक पेशेंट को वीकनेस हो रही है, एक आर्म की हुई है, पहले वो माइल्ड वीकनेस थी, देन प्रोग्रेस करके आपकी एक दिन के बाद लेग में चली गई है, दूसरे दिन में दूसरी साइड पे चली गई है। दैट इज नॉट सडन ऑनसेट जो होती है आपकी वीकनेस है। एक पेशेंट को विद इन मिनट और सेकंड वीकनेस स्टार्ट हुई एंड पेशेंट डेवलप जो उसको जो थी फुल एक्सटेंट ऑफ वीकनेस उसकी डेवलप हो गई विद इन मिनट और सेकंड, तो ये सडन ऑनसेट होती है। एक पेशेंट को वो वीकनेस प्रोग्रेस किया, 3-4 दिन लगे और प्रोग्रेस कर गई, दैट इज नॉट अ स्ट्रोक। दूसरी एक चीज बड़ी जरूरी है कि फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, एज ए डॉक्टर आपको ये समझना बड़ी जरूरी है, क्योंकि हमने स्ट्रोक के सिम्टम को कार्डिक सिम्टम के साथ कम कंफ्यूज करते हैं, स्ट्रोक के सिम्टम को जो होती है एब्डोमिनल सिम्टम के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, स्ट्रोक के सिम्टम को हम कभी या फंक्शनल बना देते हैं या कुछ और कर देते हैं। तो स्ट्रोक के सिम्टम बड़े 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 फिक्स किस्म के सिम्टम, बड़े डेफिनेट सिम्टम है जो कि आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। इसलिए आपको बड़ी क्लियरली गाइडलाइन देते हैं कि कौन सा पेशेंट स्ट्रोक है या नहीं है। फोकल न्यूरोलॉजिकल का मतलब होता है कि आपका एक साइड पे सिम्टम होंगे, दो साइड पे नहीं होंगे। अगर पेशेंट को बायलेटरल सिम्टम है, दोनों लेग वीक हैं, बायलेटरल आर्म वीक है, बायलेटरल लेग वीक है, या क्वाड्रिप्रीसिस है, फोर आर्म वीकनेस है, या जनरलाइज वीकनेस है, तो दिस इज नॉट अ स्ट्रोक। ये बड़ा क्लियर है ऐसे।
स्ट्रोक वो होगा जैसे फोकल न्यूरोलॉजिकल वीकनेस ऑन वन साइड, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वीकनेस, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नमनेस और सेंसरी सिम्टम, या फेशियल डेविएशन है, या आपका पेशेंट को जो होती है या डिसआर्थरिया है या एफेजिया है। अगर ये पेशेंट को है सिम्टम तो पेशेंट है स्ट्रोक बेसिक एंड ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन, किसी एक जगह पे कोई या तो आर्टरी ब्लॉक होती है या आर्टरी रप्चर होती है, दैट so this is called acute stroke. Next. Okay, how big is the stroke problem? ये बड़ा जरूरी है बताना कि स्ट्रोक की एपिडेमियोलॉजी क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे कि स्ट्रोक पाकिस्तान में क्या है, वर्ल्ड में कितना इसको इग्नोर किया जा रहा है। सो स्ट्रोक इज कंसीडर्ड एज नंबर 1 काज ऑफ डिसेबिलिटी इन एडल्ट। देखिए ये बड़ा जरूरी है, एक पेशेंट को हार्ट की डिजीज है, लिवर की डिजीज है, या पेशेंट को किसी आप में भी जो होती है या किसी और सिस्टम की डिजीज है, वो इतना डिसेबल नहीं होगा। आप दूसरी साइड पे सपोज करें एक पेशेंट को सिर्फ विजुअल डिस्टर्बेंस है, डिप्लोपिया है या हेमिनोपिया है, क्या वो पेशेंट सिंपल सी है वो जैसे, और उसके आर्म भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो ना वो पेशेंट जो थी गाड़ी चला सकता है, ना वो पेशेंट किसी ऐसी जगह पे फोकस कर सकता है। एक पेशेंट को एफेजिया है, वो ना टीचिंग कर सकेगा ना बोल सकेगा, ये कितनी बड़ी डिसेबिलिटी है। एंड इफ द पेशेंट इज हैविंग जो वीकनेस, लिम्ब वीकनेस, ना वो काम कर सकता है, वो पेशाब तक या पेशेंट को जो थी इवन वॉशरूम तक जाने तक ही इज डिपेंडेंट ऑन द फैमिली, लॉट ऑफ रिसोर्सेज होंगे, तो मोस्ट डिसेबलिंग डिजीज इन द वर्ल्ड एज कम्पेयर टू एनी अदर डिजीज, इवन कैंसर, हार्ट डिजीज और एनी अदर सिस्टेमिक डिजीज। इट्स अ सेकंड कॉमन कॉज ऑफ डेथ आफ्टर इस्केमिक हार्ट डिजीज, आफ्टर जो कैंसर। सेकंड कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो है हमारी जो है वो बेसिकली स्ट्रोक है। इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन पेशेंट, फैमिली एंड कम्युनिटी। एक पेशेंट को सिस्टम से लिवर डिजीज है, मे बी वो आराम से काम भी करता रहेगा, वो बाकी जो होती है जॉब कर सकता है, फैमिली के बहुत से मैटर को प्रोवाइड कर सकता है, बट इमेजिन इफ द पेशेंट हैज स्ट्रोक, उस फैमिली पे डिपेंडेंट, उसको 3-4 बंदे चाहिए होंगे एक जगह से दूसरी ट्रांसफर करने के लिए, उसको इतने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कम्युनिटी पे डिपेंडेंट, तो बहुत ज्यादा इसको चाहिए। ना सिर्फ इम्पैक्ट पेशेंट के ऊपर होता है, फैमिली के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। एंड वर्ल्ड वाइड पेशेंट हैज मोर देन 15 मिलियन विक्टिम of stroke and 5 million die every year and 5 million are permanently disabled. ये तो पुराने फिगर हैं, but condition is more worse than that. आगे next. Okay. Now we'll discuss about the blood supply of the brain. ये बड़ी क्लियर है, आप लोगों को पता है, तो बेसिक पे थोड़ा जाऊंगा। ब्लड सप्लाई हमेशा ब्रेन की दो होती है, कैरोटिड आर्टरी दैट सप्लाई द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्ज फ्रीक्वेंटली कंजेस्टेड एंड जो होती है ये बेसिकली मेन दो आर्टरी होती है। वर्टेब्रल आर्टरी आर स्मॉल and basically supply the posterior part of the brain, cerebellum and brainstem. And there is a circle of Willis between anterior circulation and posterior circulation as well. Next slide. अच्छा, what can go wrong? होता क्या है स्ट्रोक में? हमने कहते हैं डिस्ट्रप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई कैन बी एनी फॉर्म। या तो एक तो ये देखिए नॉर्मल हम दिखा रहे हैं, आपको नजर आ रही है बिल्कुल क्लियरली कि एक नॉर्मल आर्टरी है जो होती है उसकी राइट साइड पे। उसके बाद एथेरोमेटस प्लेक्स है जो होती है, ये बेसिकली उन लोगों में जो क्रोनिक डायबिटिक हाइपरटेंसिव होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये प्लेक बनता जाता है, आर्टरी को क्लोज कर देता है। एम्बोलस थर्ड फिगर में आपको नजर आ रहा है, एम्बोलस। एम्बोलस बेसिकली वो चीज होती है कि कार्डिक से, हार्ट से कोई एम्बोलस बना, पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हुई है, या पेशेंट के अंदर को किसी वजह से पेशेंट की क्लॉट बना है, पेशेंट को वेलवुलर हार्ट डिजीज है, वहां से ब्लड क्लॉट ओरिजिनेट हुआ है एंड दैट वहां जाके स्टक हो गया, उसमें वेसल ठीक रहती है। सेकंड वाले में जहाँ एथेरोमेटल प्लेक होता है वहाँ वेसल इंजर्ड होती है। लेकिन थर्ड वाले में जिसमें एम्बुलस होता है, पेशेंट वेसल वॉल इज इंटैक्ट बट ओनली एम्बुलस यूजली गोज फ्रॉम हियर, फ्रॉम डाउन टू ऊपर जाके जाके कहीं भी डिसलॉज या क्लॉट हो जाता है, एंड दैट कैन कॉज जो होती है कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी। एंड थर्ड जो होती है हमारे पास है वो हेमरेजिक स्ट्रोक है। वो आपकी जो है कैन बी जो होती है देयर इज डिसरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई एंड दैट लीड टू स्ट्रोक। नेक्स्ट। ओके, टाइप ऑफ स्ट्रोक। नेक्स्ट। वेरी क्लियरली जो थी एवरीबॉडी नोज की जो थी स्ट्रोक की कितनी टाइप्स हैं। इस्केमिक स्ट्रोक्स, हेमरेजिक, ट्रांजिट इस्केमिक टाइप्स एंड सबरेकनेट हैं। इस्केमिक स्ट्रोक मोस्ट फ्रीक्वेंटली सीन इन मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज इस्केमिक स्ट्रोक usually more than 80% of the patient are having ischemic stroke. 20% hemorrhagic stroke. Transit ischemic stroke is usually considered as a part of ischemic stroke, and subarachnoid hemorrhage usually considered as a part of hemorrhagic stroke. So overall ischemic stroke and TIA, they
patient mostly 80% of the patient are having this stroke and 20% was having hemorrhagic stroke. Next. Okay. तो व्हाट इज स्ट्रोक? स्ट्रोक बड़ी क्लियरली होना चाहिए। हम थोड़ी सी पैथोजेनेसिस बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको इसको बताऊंगा कि कैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये स्ट्रोक के सिम्टम है। बीइंग ए डॉक्टर, आप सबसे ज्यादा जो होती है कम्युनिटी के साथ एज ए स्टूडेंट एज ए डॉक्टर इंटैक्ट रहते हैं, और इसमें इतनी ज्यादा लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन है। लोग फॉरन पेशेंट जो होती कार्डिक सेंटर में ले जाते हैं, किसी और सेंटर में ले जाते हैं जहाँ स्ट्रोक के या न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट नहीं है, जहाँ स्ट्रोक सेंटर नहीं है, और पेशेंट वहाँ जाके खुआर होते हैं। क्योंकि आपको मैंने बड़ा क्लियरली बताया कि स्ट्रोक इज ए टाइम बाउंड, इवन सेकंड जो होते हैं वो मैटर करते हैं पेशेंट के मैनेजमेंट में। वो हम नेक्स्ट हम स्लाइड डिटेक्ट करेंगे कि पेशेंट को जो होता है एक्यूट जो ट्रीटमेंट है थ्रोम्बोलाइसिस या थ्रोम्बेक्टमी हम पेशेंट देते हैं, उसकी वजह से या पेशेंट की स्ट्रोक के बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है कि पेशेंट सही जगह पे जाके लैंड करे। ठीक है, तो आपको पता है इस्केमिक स्ट्रोक इज बेसिकली व्हेन देयर इज ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी, हेमरेजिक स्ट्रोक देयर व्हेन देयर इज रप्चर ऑफ द आर्टरी। और ये आपको सारी नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे इस्केमिक स्ट्रोक। अब आके हमारे पास आ गया इस्केमिक स्ट्रोक। हमने बताया कि 80% होता है लोगों में जो होती है इस्केमिक स्ट्रोक होता है, 20 में हेमरेजिक स्ट्रोक। अब इस्केमिक स्ट्रोक को आगे हमने डिफाइन करना है कि इस्केमिक स्ट्रोक की टाइप क्या है। ठीक है, या तो जो थी बेसिकली एक तो होता है ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, प्रोग्रेसिव थ्रोम्बोस है, मैंने आपको पहले बता दिया था, या को नीचे से कार्डिक से एम्बोलाई जा रहा है, ये होती है। या तो प्रोग्रेसिवली आर्टरी नैरो होती जाती है, या suddenly a clot goes from heart or from carotid and then can block the vessel in the brain. Next. Okay, this is a picture that can easily explain the and the blockage of the vessel and there's a clot in the vessel either from the heart or either from carotid artery. Next. Okay. Assalamu alaikum, sir. Am I audible? अभी आ रही है नहीं? हेलो? Yes, sir. आपकी आवाज आ रही है, sir. जी जी जी, आप मैं स्टोर करता हूँ। अच्छा, now we'll move to the hemorrhagic stroke. Hemorrhagic stroke basically जो hemorrhagic stroke होता है due to disruption of the blood supply due to जो rupture of the blood vessel। अब rupture of the blood vessel के पीछे different risk factor होते हैं। ischemic stroke होगा that is different due to different risk factor, hemorrhagic stroke due to different risk factor। hemorrhagic stroke जब rupture अच्छी होती है basically main reason is aneurysm। A weakened area in the artery is called aneurysm। fusiform जो होती है balloon shaped एक जो होती है structured deformity होती है vessel wall में, उसको हम कहते हैं aneurysm। and most of the hemorrhagic stroke में जो होती है aneurysm is underlying cause जो होती है किसी भी hypertension की वजह से वो aneurysm burst कर जाता है तो पेशेंट दैट एन्यूरिज्म जो होती है बेसिकली एबनॉर्मेलिटी होती है इन आर्टरी में, दैट कैन बी कॉन्जेनिटल एंड यंगर पॉपुलेशन में ज़्यादा पाई जाती है। एंड पेशेंट यूजली कंप्लेन ऑफ हेडेक। यूजली कई दफ़ा पेशेंट में जो होती है सारी ज़िंदगी इसी तरह एन्यूरिज्म पड़ा जाता है और कोई उसको वो रप्चर नहीं होता और पेशेंट यूजली एसिम्प्टोमेटिक रहता है। स्पॉन्टेनियस हाइपरटेंसिव ब्लीड, ये most common cause is spontaneous hypertensive bleed. Usually if the patient are hypertensive, and this is most common cause all over the world, that is responsible for hemorrhagic stroke। and malformed artery AV formation होती है जो कि is another cause for hemorrhagic stroke। तो ये तीन main risk factor हैं hemorrhagic stroke के, aneurysm, spontaneous hypertension और AV malformation। Next. Okay. So this is images most of the you people have seen in the ward। आप किसी जगह पे लोगों ने देखे होंगे कि ये सिटी ब्रेन प्लेन है जो कि एक्सियल व्यू है जो नजर आ रही है। अगर किसी को एरो से थोड़ा सा मैं समझाना पाऊँ
तो ये अगर आप सबसे पहली पिक्चर देखेंगे, ये बेसिकली इज हेमरेजिक स्ट्रोक है, जो कि ये बेजल गैंग्लिया के एरिया में ये व्हाइट सा पैच नजर आ, दो आपको एरो नजर आ रहे हैं, ये हेमरेजिक स्ट्रोक। बेसिकली दिस इज हम इसको अपनी जुबान में कहते हैं हाइपर डेंस लीजन इन राइट बेजल गैंग्लिया। ठीक है, ये टिपिकल बेजल गैंग्लिया का एरिया, दिस इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हेमरेजिक hypertensive bleed. This hemorrhage, the area where patient is having bleed, this is secondary to hypertension. Another, we can see on the other extreme, another bleed on the left basal ganglia. ये भी basically hypertensive bleed है, और basically these two are patient are having hypertension, तो hypertension की वजह से ये bleed है. Next. Okay. हाइपरटेंशन और इस्कीम, ये जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है बेसिकली इट्स सिमिलर टू इस्कीमिक स्ट्रोक, इस्कीमिक, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। जब आपके पास एज ए रेजिडेंट, एज ए हाउस टीचर, एज ए क्लिनिशियन, एज ए कंसल्टेंट आपके पास जब एक पेशेंट आते हैं, इवन आप क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे भी आप यू कैन डिफरेंशिएट दैट दिस पेशेंट इज हैविंग हेमरेजिक स्ट्रोक, दिस पेशेंट इज हैविंग इस्कीमिक स्ट्रोक। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस हैं। जो एक बेसिकली जिस बंदे के अंदर जब हेमरेज हुआ होता है ना ब्लड, वो पेशेंट बड़ा रेस्टलेस होता है, सीरियसली इल होता है, डिटोरिएट मोर रैपिडली, क्योंकि वो ब्लीड आस्ते आस्ते ऊज कर रहा होता है, एंड दैट कैन डिटोरिएट वेरी सडनली। severe headache is a part of hemorrhagic stroke, altered in conscious level, severe nausea and vomiting, neck pain and intolerance to the noise and noise. ये जो बेसिकली सिम्टम है, ये बेसिकली हेमरेजिक स्ट्रोक में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, in addition to weakness, numbness. But on the other hand, if the patient is having ischemic stroke, and these patient, usually with the patient with ischemic stroke, they are usually very calm, बड़े आराम से लेटे होंगे, ना कुछ शोर करेंगे, एफेजिया होगा, वीकनेस होगी, लेकिन रेस्टलेस नहीं होंगे। जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक जब आप पेशेंट देखते हैं, वो जो इमरजेंसी में किसी रेस्टलेस होगा, एजिटेटेड होगा, फिट्स पड़ रहे होंगे, सीवियर हेडेक होगा, वॉमिटिंग हो रही होगी, ये पेशेंट जो होते हैं बेसिकली हेमरेजिक स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं। तो क्लिनिकली भी आप आइडिया लगा सकते हैं कौन सा पेशेंट हेमरेज स्ट्रोक का पेशेंट है और कौन सा इस्केमिक स्ट्रोक का पेशेंट है। नेक्स्ट, ट्रांजिट इस्केमिक अटैक, ये बड़ा जरूरी है कि ट्रांजिट इस्केमिक अटैक को आपको पता है। ट्रांजिट इस्केमिक लुक लाइक ए स्ट्रोक बट सिम्टम इंप्रूव इन 1 to 24 आवर। होता क्या है, बेसिक टेम्परेरी डिस्ट्रप्शन ऑफ द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, लाइकली अनस्टेबल इंजन। ये बेसिकली उसी तरह जिसका हार्ट में इंजाइना होता है और पेशेंट को थोड़ी देर हार्ट जो होती है वो पेन होता है, ठीक हो जाता है, एग्जैक्टली इसको जो बेसिकली हम कहते हैं जो होती है ब्रेन का इंजाइना है। तो टीआई ये इसी तरह के सिम्टम होते हैं कि आपको 1 घंटे से लेके 24 घंटे तक बेसिकली पेशेंट को होती है। तो वीकनेस दैट स्टे इन द फॉर्म ऑफ दैट वीकनेस में बी नमनेस, वीकनेस, aphasia, dysarthria. These symptoms can stay from 1 to 24 hours, and then they usually they goes away, and that is called stroke. वार्निंग साइन होता है, एंड 1 to 20% पेशेंट विल हैव स्ट्रोक इन नेक्स्ट 3 months अगर आपने उसको प्रिवेंट ना किया। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए जी। ये बड़ा आपको पता समझ जरूरी है कि सबरेक्नाइट हेमरेज आप देख रहे होंगे। ये जो पहली आपकी जो पिक्चर है ऑन लेफ्ट साइड पे, नहीं नेक्स्ट पे पीछे, बैक बैक साइड बैक, हाँ ये बड़ा जरूरी है। तो इस पिक्चर पे देखें, जो सबसे आपको जो नजर आ रही है पिक्चर आपकी राइट साइड पे, जो बिल्कुल ट्रू जो सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन है, बड़ी स्टार शेप आपको जो हाइपरडेंस लीजन नजर आ रही है, एरो भी आपको नजर आ रहे हैं आपको। ये क्लासिकल पिक्चर ऑफ सबरेक्नाइट हेमरेज। आपको इसमें नजर आ रहा होगा कि जो ब्लड है वो ब्रेन मैटर में नहीं है, पेरेन्काइमा में नहीं है, बल्कि ये सबरेक्नाइट ये फिशर में पड़ा हुआ है, सल्काई गराय में पड़ा, फिशर में पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली अगर इन स्पेसिस में होगा, सबरेक्नाइट स्पेसिस में, तो दैट इज कॉल्ड सबरेक्नाइट हेमरेज। आप उसकी सेकंड मिडल वाली पिक्चर में आप अगर देख सकते हैं, तो बेसिकली देखें वेसल जो होती है सबरेक्नाइट स्पेस में जाके जो होती है बर्स्ट किया है, एंड दैट कॉज सबरेक्नाइट हेमरेज। आप थर्ड जो होती है मोस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं, उसमें आप देखेंगे जो सबरेक्नाइट स्पेसिस हैं दैट आर हैविंग ब्लड, सो दैट इज कॉल्ड सबरेक्नाइट स्ट्रोक। नेक्स्ट, कैन स्ट्रोक बी प्रिवेंटेड, ये बहुत जरूरी है कि स्ट्रोक को कितना प्रिवेंट किया जा सकता है। मॉडिफाई द रिस्क फैक्टर, स्ट्रोक में जब आप रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो वी हैव ऑप्शन के मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर कौन से हैं और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन से हैं।
मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन से हैं जो कि विद हेल्प, विद मेडिकेशन, विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप उसको ठीक कर सकते हैं और पेशेंट की जो होती है रिस्क को कम कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, अगर आप अपनी अच्छी डाइट का ख्याल रखें एंड ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दें, डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, तो यू कैन ब्लड प्रेशर आपको कंट्रोल कर सकते हो, मॉडिफाई कर। सिगरेट स्मोकिंग अगेन मॉडिफाइबल, अल्कोहल इनटेक छोड़ सकते हैं आप। अनकंट्रोल हार्ट डिजीज, वो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं, आप सही मेडिसिन और इलाज कराना। एट्रियल फिब्रिलेशन है, दैट इज मॉडिफाइबल, ठीक है। अनकंट्रोल डायबिटीज, बिल्कुल उसको कंट्रोल किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। कैरोटिड कंजेशन है, अगर कैरोटिड स्टीनोसिस है तो विद ट्रीटमेंट लाइक हम आप एंडाट्रेक्टमी से आप उस पेशेंट के कैरोटिड को बेटर कर सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर ऑल आर मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर विद हेल्प ऑफ मेडिकेशन, विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? अच्छा, ये वो फैक्टर हैं जो कि बेसिकली अनस्टेबल, अनएबल टू कंट्रोल, आप कभी एज को कंट्रोल नहीं कर सकते। बेसिकली नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। जेंडर है, मोर वुमेन देन men, ये बड़ा क्लियरली है कि जेंडर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। रेस, अफ्रीकन में बहुत ज्यादा स्ट्रोक होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक। पाकिस्तान में अगर देखें तो पीपल फ्रॉम पख्तून, खैबर पख्तूनख्वा, दे आर हैविंग हाइपरटेंशन एंड दे आर हेमरेजिक स्ट्रोक जो होती है केपीके में ज्यादा एज कम्पेयर टू हमारे जो रेस्ट ऑफ द एरिया में। पंजाब में अगर देखें कंपेयर करें तो इस्कीमिक स्ट्रोक बहुत ज्यादा है, क्योंकि दैट रिस्क फैक्टर थ्रू। तो ये रेस के साथ साथ रिस्क फैक्टर भी जो होती है वो चेंज होते हैं। प्रायर स्ट्रोक, उसकी हिस्ट्री, अगर किसी को पेशेंट को स्ट्रोक हुआ तो उसकी हिस्ट्री को डिलीट तो नहीं कर सकता ना मॉडिफाई कर। हेरिडिटी, अगेन अगर हेरिडिटी कोई रिस्क फैक्टर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। सिकल सेल डिजीज एज अनदर रिस्क फैक्टर फॉर, तो इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली दीज आर दोस फैक्टर दैट आर अनएबल टू मॉडिफाई। नेक्स्ट। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त है कि जो पोटेंशियली मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, कि वो फैक्टर हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि मॉडिफाइबल भी हैं, मॉडिफाइबल नहीं भी हैं। यहाँ पे है कि जैसे ओबेसिटी, अगेन जो थी मॉडिफाइबल है। फिजिकल इनएक्टिविटी, पुअर डाइट, अल्कोहल अब्यूज, ड्रग अब्यूज है, हाइपर कॉग्बल स्टेट है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। ये सारे रिस्क फैक्टर, ये याद रखिएगा कि ये वो रिस्क फैक्टर हैं जो कि हम इग्नोर करते हैं कि पेशेंट में स्ट्रोक, इन सारे पेशेंट में स्ट्रोक हो सकता है। ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, पुअर डाइट, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज, हाइपर कॉग्बल स्टेट, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज एंड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, कोई वेस्कुलाइटिस है या कोई इस तरह के बॉडी में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, दैट कैन लीड टू द स्ट्रोक। तो ये बेसिकली पोटेंशियली मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ ब्रेन, ये बड़ी जबरदस्त स्लाइड है, आप इसको अगर देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ थेरेपी इज टाइम इज ब्रेन। हम किसी और ऑर्गन के लिए नहीं यूज करते कि हार्ट इज ब्रेन, आप कभी लिवर इज ब्रेन या कि जो किडनी इज ब्रेन। वो सारे ऑर्गन जो होती दे कैन वेट, उनके पास टाइम होता है। एक पेशेंट को किडनी डिजीज है, उसके पास टाइम है। एक पेशेंट को लिवर डिजीज है, टाइम है, आपके पास इमरजेंसी में आता है। हार्ट डिजीज है, इवन उनके पास ब्रेन से ज्यादा घंटे होते हैं, वो वेट कर सकता है। लेकिन ब्रेन एक दफा ब्लड सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो जाए, दे कैन नॉट वेट। एवरी सेकंड 32 सेकंड, हर एक सेकंड में 32,000 सेल जो होती हैं वो मर रहे होते हैं। और 1.9 मिलियन सेल डाई इन 1 मिनट। एवरी आवर 120 मिलियन न्यूरॉन डाई। और कब के पेशेंट को अगर कंप्लीट स्ट्रोक है तो 1.2 बिलियन न्यूरॉन डाई करते हैं। अब खुद अंदाजा लगा लें कि एक बंदे के जो होती है, अगर कंप्लीट एक टेरिटरी इन्वॉल्व हुई है, एक पेशेंट की जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी ब्लॉक हुई है, तो उस पेशेंट को कितनी जो थी 1.2 बिलियन न्यूरॉन लॉस होते हैं, और दैट लॉस इज इरिवर्सिबल। ये बड़ा याद रखें, ठीक है, कि ये लॉस होता है, इरिवर्सिबल होता है। एक पेशेंट को 5 मिनट से ज्यादा अगर ब्लड सप्लाई नहीं की तो सेल आपके डेड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बड़े, तो इसीलिए जो थी टाइम बाउंड है। तो ट्रीटमेंट भी अब हमारे पास है, हमारे पास है जो थ्रोम्बोलाइसिस है जो हम दे रहे हैं, वो आपको बताएंगे आगे। जो होती है इसकी टीपीए अवेलेबल है, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर जो कि 4.5 आप में दिया जाता है। आपके पास थ्रोम्बेक्टमी, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी मौजूद है, जो कि आपका जो होती है बेसिकली जो होती है विद इन 6 to 8 आवर में पेशेंट अगर किसी भी ऐसे जो सेंटर में जाए, जियोग्राफी या कैथ लैब मौजूद है, पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दी जा सकती है।
तो सो दैट्स वाई, तो यू हैव टू बी वेरी, याद रखें कि अगर इमरजेंसी में जब हमारे पास स्ट्रोक आता है तो हम तो बड़े, हमारे रेजिडेंट होते हैं जो वेरी एक्टिव हो जाते हैं कि हम फौजी कंडीशन में हो, तो फौजी कंडीशन में हम टीपीए दे रहे हैं, हमारे पास 4 से 5 घंटे होते हैं जिसमें 4.5 आवर के अंदर हमने टीपीए देना होता है। इसी तरीके से आपका जो शिफा हॉस्पिटल में टीपीए है, आपका एमएच हॉस्पिटल में टीपीए दे रहे हैं, थ्रोम्बेक्टमी हो रही है आपकी एमएच हॉस्पिटल में, आपका आरआईसी में हो रही है। तो बेसिकली, और होली फैमिली में इंशाल्लाह ताला अभी रेनोवेशन के बाद स्ट्रोक सेंटर का गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। अभी जो थी मे भी होपफुली जो थी जो ही खुलेगा तो स्ट्रोक सेंटर विद द जो थी है वो पिंड इस्लामाबाद का पहला जो थी है वो पब्लिक केयर हॉस्पिटल होगा जिसमें स्ट्रोक सेंटर हो, उसमें ये पीपी और सारी चीजें फॉलो होंगी, वो सारी चीजें प्रिपेयर हो चुकी हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। अच्छा, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज स्ट्रोक, स्ट्रोक को रिकॉग्नाइज कैसे करना, ये बड़ा जरूरी है। ये हमारे लोगों को ना इलम होता है, ना लेमैन को, ना हर एक को पता होता है कि लेफ्ट साइड पे चेस्ट में हार्ट यूं ही सिंक किया, कोई और प्रॉब्लम हुई है तो हार्ट अटैक है, और फौरन जो है तो उठा के जो है आरआईसी चला जाता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि अगर लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे नमनेस हो जाए, या थोड़ी सी वीकनेस हो जाए, डिसआर्थरिया हो जाए, या कोई खुदा न खास्ता डिप्लोपिया हो जाए, तो ये स्ट्रोक के सिम्टम है। ये बड़ा जरूरी है बताना। हम इस सिलसिले में एज ए स्ट्रोक सोसाइटी हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इसको किया जा सकते हैं, इसको बड़े तरीके से जो है वो इसको लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जा सके। अच्छा, एक स्ट्रोक स्केल है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें, मैं आपको बताता हूँ। ये फास्ट, ये बड़ा जरूरी है, ये आप लोगों के लिए, बीइंग स्टूडेंट, बीइंग ए रेजिडेंट, हाउस विजर, लेमैन, मतलब है कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रोक है, व्हाट इज स्ट्रोक, और वो स्ट्रोक जो है जो होती है ना उसके क्या सिम्टम। ये फास्ट स्केल है, ये बड़ा जरूरी है, जिसे कहते हैं फास्ट से फेस है, एफ से ए से आर्म ड्रिफ्ट है, एस से स्पीच है, एंड टी से टाइम टू कॉल 911, मतलब हम जो होती है 1122 के लिए आते हैं। नेक्स्ट पे करेंगे। ये बड़ा इतना आसान स्केल है फास्ट स्केल, इसको सिंसिनाटी प्री हॉस्पिटल स्केल भी कहा जाता है। और ये हर बंदे को हम सिखाते हैं, लेमैन को सिखाते हैं, मार्केट में जाके, स्कूलों में जाके लोगों को पढ़ाते हैं कि फास्ट स्केल अगर ये सिम्टम हो तो पेशेंट को स्ट्रोक है, हार्ट अटैक नहीं है। ये बड़ा क्लियर बताना होता है। बहुत से पेशेंट होते हैं, जरा सा फेस डेविएट किया, स्पेशली लेफ्ट साइड पे वीकनेस हुई कि हार्ट भी उसी साइड पे है, तो वो कहते हैं ये हार्ट का अटैक है, तो सीधे उठा के जो कार्डियक सेंटर में टाइम जाया करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो बेहतर है कि जो ऐसे पेशेंट को जो ट्रैक करके प्रॉपर अवेयरनेस दी जाए कि ये पेशेंट स्ट्रोक के पेशेंट है। नेक्स्ट। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रोक एंड स्ट्रोक मिमिक, ये बहुत जरूरी है कि स्ट्रोक कौन से हैं और स्ट्रोक कौन से नहीं है। ये बड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए। मैंने कि ये स्ट्रोक कौन से सिम्टम है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक। मैंने बहुत पहली स्लाइड में आपको बताया था कि स्ट्रोक इज बेसिकली सडन ऑनसेट ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट रिजल्टिंग फ्रॉम वेस्कुलर ओक्लूजन और हेमरेज। ये तो आपने बताया था कि सडन ऑनसेट होना चाहिए और फोकल सिम्टम होने चाहिए, वो स्ट्रोक के होते हैं। अब स्ट्रोक मिमिक्स कौन से हैं? मिमिक्स वो हैं कि ऑल अदर नॉन वेस्कुलर कंडीशन, नॉन स्ट्रोक कंडीशन दैट में क्लिनिकली प्रेजेंट लाइक सिम्टम। बहुत सी ऐसी न्यूरो की ऐसी चीजें हैं या नॉन न्यूरोलॉजिक चीजें जो कि स्ट्रोक नहीं होती लेकिन स्ट्रोक की तरह लगती हैं, तो लोग उसको भी स्ट्रोक समझ के जो होती है न्यूरोलॉजी में या आपको स्ट्रोक न्यूरो फिजिशियन को या आपके पास भेजना शुरू कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें, मैं आपको बताते हैं। ओके, फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम ऑफ स्ट्रोक ये क्या करते हैं? बहुत पहले आपको मैंने बड़ा क्लियरली इन्फॉर्म किया कि फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इन द कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मोटर वीकनेस, वीकनेस हो सकती है, क्लमजीनेस हो सकती है, टेक्सिया हो सकती है बट ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। आइदर स्पीच हो सकती है, डिफिकल्टी स्पीकिंग, स्लर्ड स्पीच हो सकती है, और कंप्रीहेंशन खराब हो सकती है। ये भी बड़े क्लियरली होनी चाहिए। सेंसरी सिम्टम एबनॉर्मल फीलिंग ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, और विजुअल सिम्टम हो सकते हैं, मोनोकुलर, बाइनोकुलर और डिप्लोपिया हो सकता है। तो ये सिम्टम है जो पेशेंट के है, पेशेंट के स्ट्रोक के सिम्टम है। नेक्स्ट। हाँ, ये देखेंगे, ये बड़ी, ये वो सिम्टम है जो कि इनके साथ आपके साथ बड़ा क्लियरली, कई दफा आप इमरजेंसी में होंगे एज ए डॉक्टर, या आप एज ए डॉक्टर आपके पास पेशेंट आया जाएगा और उसको लेबल कर दिया जाता है कि पेशेंट ये स्ट्रोक है। अब ये जो फॉलोइंग सिम्टम है 6-7 है, ये याद रखें, ये स्ट्रोक नहीं है। अगर पेशेंट आता है जनरलाइज वीकनेस के साथ, सेंसरी डिसऑर्डर, पूरा जिस्म में कीड़ियां चढ़ रही हैं, ये स्ट्रोक नहीं है। जनरलाइज वीकनेस, वीकनेस इन ऑल फोर लिम्ब, ठीक है, अगर वीकनेस है, थीनिया है, फटीग है, तो दिस इज नॉट अ स्ट्रोक। बड़े वेरी क्लियर, ये स्ट्रोक नहीं है।
लाइट हेडीनेस, किसी को सर हल्का सा हुआ जा रहा है, सर भारी है, ये भी स्ट्रोक नहीं है। फेंट, अगर पेशेंट को फेंट हो जाता है, नॉट अ स्ट्रोक। पेशेंट को ब्लैकआउट होता है, ब्लैकआउट इज नॉट अगेन स्ट्रोक। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड फीसिस, याद रखें ये सिम्टम वो हैं जो कि आपको स्ट्रोक के साथ कंफ्यूज नहीं करने चाहिए। कोई भी स्ट्रोक होगा जो प्योर, उसमें ये सिम्टम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। स्ट्रोक के साथ ही हो सकता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल यही सिम्टम, एक पेशेंट आपके पास आया, वो कहता है मुझे ब्लैकआउट होते हैं, तो वो स्ट्रोक नहीं हो, कुछ और चीजें हो सकती हैं, बट नॉट अ स्ट्रोक। कन्फ्यूजन स्टेट, बहुत से पेशेंट होते हैं कन्फ्यूजन स्टेट के साथ आपके पास आते हैं। टिनाइटिस हो रहा होता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा बजिंग साउंड या विस्लिंग साउंड ईयर में आ रहे होते हैं, तो ये स्ट्रोक नहीं है। तो ये सिम्टम आपको, स्ट्रोक कौन से सिम्टम है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि मोटर वीकनेस हो सकती है, पेशेंट को नमनेस ऑन वन साइड हो सकती है, पेशेंट को एटेक्सिया हो सकता है, और पेशेंट को सेरेब्रल सिम्टम एक साइड पे हो सकते हैं, या पेशेंट को स्पीच या डिसआर्थरिया हो सकता है। तो दीज आर सिम्टम ऑफ स्ट्रोक एंड दीज आर नॉन फोकल न्यूरोलॉजी, द नॉट सिम्टम ऑफ स्ट्रोक। नेक्स्ट। ओके, अच्छा, आपने पेशेंट की, आपके पास पेशेंट इमरजेंसी में आया, पेशेंट, आपने पेशेंट देखा लेटा हुआ है, जो थी पेशेंट आपसे हिस्ट्री ले रहे हैं, एक पेशेंट को कंफ्यूजन है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, सीजर एट ऑनसेट हुआ है, पेशेंट की नॉन न्यूरोलॉजिकल साइन है, पेशेंट सारी आर्म रिमूव कर रहा है, कोई ऐसा अदर सिम्टम इन्वॉल्वमेंट है, फीवर है, चिल्स हो रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन है, तो अगर ये पेशेंट इस तरह की हिस्ट्री देता है तो आप बड़ा क्लियर समझें कि ये पेशेंट को स्ट्रोक नहीं है, पेशेंट को क्योर कंडीशन है। अगर पेशेंट के, एक पेशेंट आपके पास 60 साल का पेशेंट आता है, उसको आप कॉरोनरी आर्टरी डिजीज की भी हिस्ट्री है, उसको इस्केमिक हार्ट डिजीज है, स्टेंट पड़े हुए हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन है, और ऐसे पेशेंट को अगर फोकल साइन हो जाए तो उसमें पेशेंट आपको क्लियरली आप सीरियसली आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट की एज और रिस्क फैक्टर है वो गोज टुवर्ड द स्ट्रोक, तो ऐसे पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। तो ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। कौन से जो सिम्टम है वो ये शो करते हैं कि पेशेंट को स्ट्रोक नहीं है, और कौन से सिम्टम ऐसे हैं जो कि या हिस्ट्री में ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे आप कह सकते हैं कि पेशेंट को स्ट्रोक है। बहुत दफा आप ऐसी जगह पे काम कर रहे होंगे, बीइंग ए डॉक्टर, जहाँ ना सीटी स्कैन होगा, ना जहाँ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, तो अगर आप पेशेंट को जो है बड़ी इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट। जी, ये बड़ा क्लियरली आप जो होती है एक्सट्रीम, आप राइट साइड से शुरू हो जाएं, जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें जो थी हेमरेजिक स्ट्रोक इन सेरेबेलम है, राउंड वाइट पैच जो नजर आ रहा है वो हेमरेजिक स्ट्रोक है। सेकंड पे आप देखें जो हाई सेरेबेलम में जो होती है या ऑक्सीपिटल लोब में हाइपोडेंसिटी आपको मिलेगी, ये हाइपोडेंसिटी बेसिकली स्ट्रोक। सेकंड थर्ड में भी जो होती है हाइपोडेंस लीजन है या ब्लैक आपको ये एरिया जो नजर आ रहा है स्ट्रोक। एंड थर्ड पे जो आपको नजर आ रही है वो भी जो वाइट स्पॉट नजर आ रहा है आखिरी पे, ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको नजर आ रही है, दैट इज आल्सो कॉल्ड हेमरेजिक स्ट्रोक। नेक्स्ट। सेरेब्रल प्रेजेंटेशन, ये बड़ी क्लियरली आपको पता हो गया कि पेशेंट को सेरेब्रल स्ट्रोक है तो पेशेंट को अटेक्सिया हो सकता है। नेक्स्ट पे जाएं जरा। पेशेंट को अगर सेरेब्रल स्ट्रोक है तो पेशेंट को गेट एटेक्सिया हो सकता है, इनकोऑर्डिनेशन हो सकती है, इम्बैलेंस हो सकता है, वर्टाइगो हो सकता है, वॉमिटिंग, ट्रंकल एटेक्सिया, ट्रेमर या नेस्टैग्मस। अगर ये सिम्टम ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी है तो दे कैन गो इन द फेवर ऑफ जो सेरेब्रल स्ट्रोक। तो आपको फौरन पेशेंट को, आपको इमेजिंग चाहिए, सीटी स्कैन टू एस्टैब्लिश द डायग्नोसिस। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमने ये इस प्रेजेंटेशन में जो रैप अप करते हैं इस प्रेजेंटेशन को, कि इस प्रेजेंटेशन में हमसे बताया कि स्ट्रोक होता क्या है, डेफिनेशन, स्ट्रोक की टाइप्स क्या हैं, फिर हमने ज़्यादा डिस्कस किया कि स्ट्रोक बेसिकली इसके पीछे पैथोजेनेसिस क्या है, इसके रिस्क फैक्टर मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल आपको पता होने चाहिए स्ट्रोक का पेशेंट जब आपके पास आता है, और कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, फिर उनको मैनेजमेंट करनी पड़ती है। फिर उसके बाद पेशेंट की, आपके पास जो सीटी स्कैन पे आप डिफाइन करते हैं कि कौन से पेशेंट को किस तरह का स्ट्रोक है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है मेरे पास जो होती है वो मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी आपको खत्म कर लूं। दैट इज बेसिकली जो थी टू द पॉइंट है कि इस वक्त रीसेंट मैनेजमेंट स्ट्रोक की, अगर पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आ जाता है, बीइंग ए फिजिशियन आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। बहुत देखें, स्ट्रोक की प्रेजेंटेशन तो बहुत लंबी है, लेकिन वो बड़ी जरूरी है कि आपका पेशेंट आए इमरजेंसी में तो क्या क्या चीजें करनी है ताकि आप पेशेंट को टाइमली जो थी प्रॉपर जगह पे रेफर
अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है सर? Sir, am I audible? Okay, yeah. Okay, we can move to the next presentation. अच्छा बात सुन 37 मिनट हो गए. इज इट ओके कि जो थी आप लोगों का नेक्स्ट सेशन है, या शुड स्टार्ट अनदर प्रेजेंटेशन? Sir, you have time till 11 तक आप इसको कर सकते हैं. हेलो सर आपके 11 तक आप इसको लेके जा सकते हैं. आप Sir, am I audible? आपकी आवाज नहीं आ रही. सर अभी आ रही है सर? सर मैं आपको मैसेज करता हूँ सर. हेलो यस सर, आपकी आवाज आ रही है. हाँ ये अच्छा, इस तरह करो फिर यही प्रेजेंटेशन है तो ठीक है. बाकी कोई लंबी प्रेजेंटेशन है तो वो जो थी नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं. 67 स्लाइड्स हैं. वो तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा. आधा 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 ही घंटा. ठीक सर, we can arrange another session with you. Thank you so much sir ठीक for है. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. ठीक. Uh, thank you, sir, for joining us today. It was an honor to have you here with us, and we will be sure to implement all your advices. And inshallah, we will soon arrange more workshops with you, especially on this topic and on other topics as well. इस Thank तरह you पता so है much मैं, for joining जी us. जी बिल्कुल बेहतर. मैं बता रहा हूँ कि इस तरह करो तो तुम इस तरह की स्ट्रोक की ना, क्योंकि आरएमसी में बिकॉज वी आर गोइंग टू ओपन अ वेरी बिग स्ट्रोक सेंटर. तो फर्स्ट सेंटर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, मैं उसका पार्ट हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 8 स्ट्रोक सेंटर 12 स्ट्रोक सेंटर अनाउंस किए हैं, जिसमें होली फैमिली हॉस्पिटल का है, जिसमें डॉक्टर वकास आ गए न्यूरोलॉजिस्ट के, उसके साथ मिल के मैं सारा उसको कर रहा हूँ. अभी हम वर्कशॉप अरेंज करने जा रहे हैं. आप बल्कि उस पर आना होली फैमिली में या बीबीएच में इसी महीने अगले 2-3 हफ्तों में. वेरी बिग वर्कशॉप जो स्ट्रोक की है, क्योंकि स्ट्रोक सेंटर के मतलब करने के लिए, क्योंकि हम जो ही होली फैमिली खुलेगा हम स्टार्ट स्ट्रोक ट्रीटमेंट, थ्रोम्बोलाइसिस, थ्रोम्बेक्टमी और सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं. तो डेफिनेटली तुम लोग उसका पार्ट हो गया, एज ए स्टूडेंट, एज ए रेजिडेंट, एज ए डॉक्टर. तो मेक श्योर कि इस तरह का कोई अरेंज करो. तुम जिसमें स्टूडेंट को बुलाओ किसी बड़े हॉल में, क्योंकि अवेयरनेस लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, तो ताकि हम एक बड़े लेवल पे इसको कर सकें. ठीक है. Definitely, sir. Yes, sir. ओके जी. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके. तो इंशाल्लाह विल कीप इन टच. एंड कोई मसला हो किसी किस्म का स्ट्रोक से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन. ठीक है. Thank ओके you so much, sir. ओके ओके Inshallah, sir. ओके. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum, sir. अस्सलाम वालेकुम. Okay, everyone, we have a little time
20 minutes till the next speaker, our guest speaker, Dr. Rashid Bajwa, Sitare Imtiaz, will be joining us at 11 a.m. inshallah. You may rest for the time being and have a little break. Thank you.
You are mute, Haris. Unmute yourself. Morning, sir. Thank you so much for joining us, sir. Bisma will briefly introduce you before the session, sir. Okay. Bisma, please go ahead. Yeah, sure. We are honored to have Dr. Rashid Bajwa Sitara Imtiaz with us today. Sir is a graduate of King Edward Medical College, now King Edward Medical University. He has done his master's in public health from Nuffield Institute, University of Leeds, UK. He has provided many great services and has a number of achievements nationally and internationally. He is the Chief Executive Officer, National Rural Support Program, as well as the Chairman Board of Directors, NRSP. He is the Chairman of Policy Committee, Pakistan Microfinance Network, and the Director of Khushhali Fund, Pakistan. He is the member of General Body, Pakistan Poverty Alleviation Fund. Additionally, he is an ex-member of Civil Services of Pakistan and also an advisor of the board, Ghazi Bharota Tarakkiyati Idara. These are just a few of his many achievements. We are very honored to have you today with us, sir. Please continue with your presentation. Thank you so much. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Haris, to have invited me over and to give you a discussion and a talk. Unfortunately, I am on my mobile, so I might have to log out and then log in on my laptop so that I can share my presentation if it is okay with you guys. But at the Sir, moment, you may share with me, and I'll screen share the presentation if that is all right with you, sir. let me check if I am able to access the email. CIP1. Okay. इसका तो मांग रहा है. एक मिनट. Anyway, let's start, and I'll connect. While I'm connecting, I'll let you know what is the issue. So at this stage, can you tell me, apart from the students, who other is the audiences? Are they all fourth-year students, or who are they, Haris? Sir, we have mostly medical students as well as a few non-medical students as well, sir. Okay. From different universities such as NAML, etc. Okay. So, first of all, let me explain to you that as a medical student, where were we and what were our aspirations? हम क्या सोचते थे कि हमने क्या करना है? And then see how I can fit into what would be your aspirations and what do you think you should be. First of all, I was very lucky to have got admission into the King Edward Medical College, and then to study there for almost 6.5 years, because there were closures and everything else. But while we were in the fourth year, we started understanding that where we want to go and what do we want to do. So first of all, I'm sure that everybody is very clear that that your aspiration is very important, and this is the time to understand and think what you want to do, whether you want to be a specialist or whether you want to go into general practice or whatever. So this is important that you understand what do you want to do. And so far as by the end of the road, like I am now 68 and a half, so when I look back at my career progression, we have been doing many things, and at the end of the day, I found out that whichever way you want to go is good enough. I mean, the basic thing is that you must have basic education.
And then whichever specialty or whichever sector you want to choose opens up a lot of opportunities. So I'm starting from an optimistic view that you can actually do that. Uh, so sometimes what happens is that when we were students, we thought, "Okay, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, क्या काम करें?" We get into despair. There's no need for that. By the time you really reach my age, you will know that the society and the country and the world has opened a lot of opportunities for you. And what I found out is that I'm just going to switch out. Okay, so we are okay now. And can you give me rights for presentation? I will do the presentation myself. Have the rights. Just a minute, sir. Yes, sir. Just a minute. Anyway, while RS is trying to give me permission, what I was trying to say is that at your age, uh, anything you want to choose is good enough. लेकिन जो भी आपने काम करना है, make sure that you excel in that work. So even a general practitioner, starting from the scratch, because everyone of you will become a general practitioner. Starting from general practitioner up to a specialist or going abroad or staying in Pakistan, it does not matter. I have seen, for example, my colleagues who opted to go to Canada. Everybody thinks about going to Canada, and most of them ended up into very menial jobs like taxi driving and this and that. Doctors. So, and there was a lot of trauma uh, associated with that. So this is a choice which everybody wants to do. But the choice, all I'm trying to say is that whichever choice you want to do, if you excel in your work, the society and the world will open opportunities for you. And those opportunities, when you come to my age, then when you add on everything else, you will find out that you are no different from people who have gone to United States or England or Canada or Australia or wherever, or opted to stay in Pakistan. So it hardly matters. But what does matter is that you have to be very strong and specific on what you want to do. So whichever specialty you want to take, and whichever area you want to work in, for non-medical students, whichever area you think that you are good enough, I think is fine. And यार ये हारिस अभी तक आपने मुझे वो नहीं दी. You have the right. You may share the screen, sir. You have the admin rights. Have the rights. Sir, your screen is visible now, sir. ठीक है. Okay. Now, having said that, let's come to something which we do in healthcare, particularly primary healthcare, and which we call the health systems strengthening approach. So one of the things you might want to look at is that healthcare in itself is not one monolith. It has many different elements
means that it has many different kind of branches which needs to be addressed if you want to address healthcare. I'll give you an example. People here in Pakistan at the moment are talking a lot about stunting and about malnutrition. At the moment, this is a big fad, and the government is putting tons of money into this. But the problem is that nobody wants to understand that where is the problem. There is no such thing in this part of the world, particularly Pakistan, where mothers will not feed their children, even to a level of highest poverty which you have. So food is given to the child. And we have seen in our age, when we were growing, this was not a concept. So something has happened. We never knew about these terms like malnutrition and stunting. So the point was that it never was in this area, and why is it now prevalent in this area? So if you look at the epidemiology of this whole thing, you will find out very interesting aspects. One is a very high population growth, because I think nobody talks about it and nobody considers it as part of the health systems approach. But to me, this is the biggest challenge the society is having. And so high population growth actually throws out a lot of challenges in terms of distribution of food in a family and nutritional aspects to it. Second most important thing is that what has happened is that with this population growth, there has been a huge urban to rural migration. So there has been, so this rural migration itself, from rural to urban migration itself throws a lot of challenges. You will see kachi badis. I'll give you an example. In Karachi, the number of houses in kachi badi are more than the number of houses in the settled area. So Karachi has become a bigger kachi badi than the entire Karachi city now. This is just one example. But this is how it happens. You don't have any sanitation, you don't have any clean water supply, and this and that. The third important area is that there is very little understanding of what cleanliness is, what is personal hygiene, and more importantly, what is clean water. Because 70% of your communicable diseases are related to water. Now, I'm sure if you ask this question when you go home and you have a glass of water from a tap and a glass of water from Nestle bottle or something, and you show it to your elder parents or your grandparents and ask them to identify which is clean and which is non-clean. This is an experiment you might want to look at, and you will find that most of the time they will not be able to make a distinction between what is clean and what is not clean, unless and until you do a lab test and this and that. So here is a case where people think that they are drinking clean water because it looks clean. It looks transparent. Normally you drink water in a glass. A glass of water is always clean. So you drink it, never knowing that what the pathogens are in it and what are, like, for example, in our case, as medical practitioners, the level of fecal coliform in it, and then other metals. So what happens is that when a small child, an infant, when the mother weans the child, she gives the child either a water which looks clean, but it has contamination in it. And if the contamination level is higher than what we call a permissible fecal coliform level, which has been demonstrated by one of my professors in the University of Leeds, Duncan Mara, and he actually got a Nobel Prize on this, that what is the permissible level of coliforms which human being can ingest. Anyway, coming back, so the water becomes very important, particularly for an infant when it's the weaning time. Sometimes it happens is, now look at the source. When you are a parent, you bring in water
from a Nestle source, you have a big Nestle bottle sitting, you put in that tap on it. If the tap is contaminated, the entire water gets contaminated. If the mother is going to change the nappy of the infant, which is very virulent fecal coliforms, and then does not normally wash her hands with soap and water and touches the water, which is a Nestle water, it will become contaminated. So there's a lot of civic education which is needed to ensure that how do you ensure availability of clean drinking water or potable water as they call it. Now you might ask this question, oh, but then what happened to our grandparents when they were young? They didn't have this stunting and other issues. So what was it that they were doing? So for you, all of you, there's a little story that your grandparents, right up to late early 60s, the water was controlled by the grandmother. So the pitcher, घड़ा जिसको कहते हैं, उसको कंट्रोल करती थी घर का जो बुजुर्ग था, and nobody was allowed to touch. So there was a separate area जहाँ 3-4 घड़े पड़े होते थे और वहां से वो रात को पानी भरते थे, ठंडा रहता था, but nobody would touch it for the sake of contamination, for the risk of contamination. So somebody was there to pour water, particularly generally the eldest family, because there was a method to it. Then I don't know whether you have seen a surahi, which is a ghada with a small long beak. Now the question was, this surahi is no more here, but that surahi was an instrument, was a technology where a child or a human being could not put his hand into the water. वो इतनी बारीक होती थी उसका गला कि उसमें हाथ नहीं जाता. So these two very simple, straightforward things were able to allow that this contamination was not happening. Now we are in an age where we don't even look at this contamination. Let's look at that what happens if a contaminated water, for all the reasons I've told you, is ingested by the child, infant who is weaned. Then his inner lining, the celiac membrane of the intestine, of the gut wall, they get, because of constant exposure of these pathogens, they get distorted. So as a result, their ability to absorb nutrients get diminished. What does it mean? Which means that the nutrients are being given by the mother or the parents, but the child is unable to pull this nutrient from the gut wall into the bloodstream. And this is the biggest issue related to malnutrition and stunting, as a result of stunting. So the water becomes the most critical element for all medical practitioners because of the relative association of water with this communicable diseases. Now, what do you do about it? One is that you go back and you introduce the ghada and then the surahi, but it's not going to happen. Those era is gone. The era of fridge and a bottle and a Nestle bottle is here. So that is not going to happen. But there are technologies through which, for example, without spending a penny, you can clean water. One is called a Sodis technology. Sodis technology is very simple, that you have a glass water bottle, you put it in the sun for 8 hours at a 45 degrees angle, and that ultraviolet rays from the sun rays actually cleans the water. A very simple, straightforward technology. All it needs is an exposure of this water bottle, big glass water bottle or small glass water at the roof or wherever, but it takes effort to bring the water up and bring it down, or bring it at a place where there is sun. Luckily, we are very lucky that we have sun all the year around, so we can actually address this issue. Will we do that? Is something else. Now, related to this whole communicable disease issue, and we will see that how it has happened, how it is impacting our healthcare. The second most important thing is immunization. Again, immunization is part of the healthcare system,
water is not. Remember, during the history of the country, initially, drinking water was part of the health ministry and the health departments. Now it is under, now the people think, the policymakers think that it is an engineering problem. So they set up a new department. It's called Public Health Engineering Department. So people, civil engineers who are listening to me, you will probably, some of you will go there, which means just give water. Irrespective of whether it is clean or not, that's not their forte. Their problem is they want to give access to drinking water, and that's it. So it's shifted from a healthcare issue to a public health issue, to an engineering issue, civil engineering issue. And when you do that, when you make this shift, then you forget about the quality of water, and you forget about the portability, and then you have the results with you. One of my friends in the Civil Service Academy was telling me, he's the Director General there. He said that, we started young civil servants who were coming to the training. When they expose them to physical activity, they end up into fractures of limbs. So, and the reason is that they are so fragile, and the fragility is because of the whole issue which I have just explained to you. So this is one big area which needs to be tackled, and I have this case study. I will tell you at the end of my lecture that what can be done about it. Now we come to the so far as communicable diseases are concerned, 80%, 70 to 80% can be addressed. You can reduce the healthcare burden of disease, and people can have a higher quality of life. And the QALYs, as they call it, quality adjusted life years. This is a public health acronym. You can have a look at that. But coming to the issue of other issue is related is sanitation. Again, we don't control, we don't have any issue with that. We have local government departments which are looking at sanitation. Actually, it's a healthcare issue again. So if you have solid waste or you have liquid waste, and if somehow it mixes up with drinking water, then you have a problem. Many of the low income cities and villages have installed, if the first thing which they do, once they get a source of money, particularly somebody has gone abroad to Dubai or anywhere and sending money, is to put in a donkey pump. Now what a donkey pump does is that even if there is no source water, it's closed, the pump actually creates a negative suction, and we have these galvanized iron pipes which are rusted, and with this negative suction pressure, whatever water is around these pipes are sucked in. Now the water around this pipe is mostly sewerage water. So one of the things which actually happens as a result is that we start drinking contaminated water. It looks clean and clear, but it is contaminated. And so one has to be careful how to use this. So austerity and money actually brings in a lot of problems for public health care, as I understand. The third area is sanitation, like solid waste, and that too is very important. People are very casual. They will throw their solid waste out on the road or into the street, and expecting that somebody will pick it up and take it to a place where it will be sorted out. Doesn't happen like this in Pakistan. So you see all ये सारी नालियां बंद हो जाती हैं, और उसकी वजह से gutters जो है ना वो खराब हो जाते हैं, so on. Related to is this plastic bag issue, which obviously adds to the insult to the injury. So if you look at this whole paradigm, you will see that it is all related to contaminating water, and there are various elements to it which I've just described. So this is one of it. Now let's come to the non-communicable disease. So you know that there is now a pandemic, diabetic pandemic. पाकिस्तान में, दुनिया में भी है, लेकिन पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल आप कहते हैं कि every second person
HB1AC of higher than 8.5 or even higher. Obesity is very prevalent. And interestingly, you will see that obesity in low income households, particularly female, is more than in the higher income households. This is very strange. Yani low income households do not have the money to spend, they have less money to spend on food, but they are obese. So they're storing a lot of fat in their body. So what is happening? And so here is the case where Pakistanis are overwhelmingly taking in more carbohydrates than they used to, because the access to carbohydrates has become easy. अब तो मैकडोनल्ड पे जाएं, फूड पैंडा लें, and so on and so forth. So एक तो carbohydrates का जो access है वो आसान हो गया. But adding on to it is that carbohydrates are cheaper than the other quality foods like protein or fish or mutton or everything else. So poor people want to ingest more carbohydrates. As a result, they go into what you call the gluconeogenesis system, and you can look at that. What is it? But essentially, what happens is that the calories which are consumed, which are more than what you can use, are stored through the liver through this mechanism, and they make this fat, and this fat is then turned into a very virulent kind of a fat, leading to a lot of inflammatory reactions. So, and then inflammation itself is a precursor to in resistance to what you call a metabolic syndrome, insulin resistance, and others. So nobody talks about food. Now the question is, what would a poor person? You might ask, but what can a poor? There's no choice for the poor person. There is choice. The choice is that whatever you ingest, you burn. So our forefathers, grandparents and others, who some of us belong from the rural areas, like myself, I know that the head of the household or grandfathers and our parents would go into the field every morning. They would do a lot of physical activity, and they would burn this excess carbohydrates, and their bodies were fairly stable. In our era, this is not the case, because people have become very sedentary. They would want to come from work, sit on a couch, switch on the TV, have some snacks, which are all carbohydrates, and feel that this is how they live the life. Even students I've seen that they would, even when they're studying, they would have with them a bag of chips or something else to munch on when they're concentrating on their studies and so on. So basically non-communicable disease, and there is a new concept of what they call genetic markers, which are now coming up, and while you will grow up, you will find out that medicine itself has changed, and you will now have very targeted, tailored made medicine, which are affecting your genetic makeup. So genome has been broken. We know that the science is moving ahead, and so in a nutshell, I tell you that it is like आपने धागे की चरखी देखी है ना, तो वो जो धागा लिपटा होता है, that is kind of a chromosome, which is like 3 meters wide in length, and it is wound out, and the part of that chromosome which is exposed, धागा जो बाहर नजर आ रहा होता है outer layer पे, वो आपके genetic makeup होता है उस सेल का. और अगर वो धागा ढीला हो जाए तो फिर जो नीचे वाला धागा है वो निकल आता है, और वो धागा जो नीचे वाला निकलता है धागा, वो हो सकता है कोई और जीन को ट्रिगर कर दे. इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, that go back when you go home and you check the ears of your grandparents, particularly grandfather, you will see that their ears have some hair growing on. I have some hair started growing in my ear, on my ear lobes, and one of the reasons is that वो जो आपका वो जो genetic system है वो थोड़ा सा expose हो रहा है, तो cells become confused that what are they going to produce? Are they going to produce insulin or a hair or whatever? And that, as a result, it becomes confusing.
Then there is what they call an epigenome. Now, epigenome is a new concept, which means it's like, आपने कुछ देखा होगा, जैसे आपने, आपके ज़माने में तो अब सीडीज नहीं है, हमारे ज़माने में सीडीज होती थी, सीडी डालते थे, और सीडी में इंक्रिप्टेड होता था मैसेज या सॉन्ग या जो भी है या वीडियो, और एक उसका रीडर होता था सीडी का, जो उसके ऊपर से चल के उसको पिक करता और उसको इंटरप्रेट करता था उस डेटा को. दैट इज एन एपिजीनोम. So when you go back home, please have a look at genome and epigenome to understand this whole issue of tackling the non-communicable diseases. So अब वो ये कहते हैं कि it is just this whole epigenome and the function of the genome that relates to non-communicable diseases like diabetes, like Alzheimer's, like hypertension, uh, and and the other thing is this whole inflammation, which I've talked about, because of this extra carbohydrates turning into fat, and that fat is very inflammatory, and it inflames the inner lining of the blood vessels. As a result, you get into this whole issue of atherosclerosis and other. So I've talked about both sides of it, the story. And if you grow and if you have interest in genetics, I think doctors going into genetics, there is a huge, particularly the ones who are going to be physicians, there's a huge new world out there for them, because ultimately they're going to be now genetic medicines to combat other things. There is, for example, this new medicine which has come up. I don't know whether you've heard of it, this Ozempic. This is the middle level. It's genes and it's also some physical medicine, but it is being used to treat type 2 diabetes as well to obesity. And it was made by Denmark. And the other day I was hearing that the Denmark has made so much money because of one drug that the total income of that company is more than the total income of the country. एक ड्रग ने चेंज कर दिया वो सारा का सारा. So just to example, so gives you an example. So coming back now to the example of the health systems approach. So what I'm trying to say is that whether it is communicable or non-communicable diseases, you have to have a lens of looking at it from broadened side. Look at it from the preventative side. I've explained to you the water relation and the sewerage and sanitation, and also, for example, the immunization part of it. The good news is that all these things are available in the country, but they are somehow fragmented. The last mile connection, वो जो dendrite connection जैसे हम कहते हैं axons का, वो ये है कि the last mile connection between the service provider, which means the last basic health unit, and the people, वो disrupted है. तो ये जो मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, ये उस डिसरप्शन ने उसको ठीक किया है, एंड कैसे किया है, जिसमें हमने हेल्थ केयर सिस्टम को लिया है. ये हमने, मैं आपको बताया, I'll share this with Alison, you can have a look at it later on. But look at that, it is not just one thing in healthcare. There are many things which are happening, including policy, health information systems, and then healthcare and community engagement. And then there are various roles. Every institution has its role to play. But the system strengthening is that you can connect all these four things: water, immunization, sanitation, and education, as one system. इस पूरे सिस्टम के, जिसको हम एक्रोनिम वाइज बन जाता है WISC, इस वाइज में 4 चीजें आप ऐड कर सकते हैं बड़ी आसानी से. तो rather than looking at healthcare, looking at immunization, looking at water or education, you look at WISE. ये चारों चीजें आप इकट्ठी करते हैं. So this is a systems approach. And it also targets some of the SDGs, and these are the SDGs I said. And there's a rationale to it. I don't need to get into it. Why did we do that? But we have covered 2 tehsils, 100%. Every household is covered. One is in Sindh under Muhammad Khan, the other in Hasilpur. And we did this survey, and we did this. I just want to take you that what did we do in water? Can you see that there are some red hand pumps and some green hand pumps? So what we did was that we
tested samples of all these public. Excuse me, sir. This is the water. Excuse me, sir. आपकी screen दोबारा share कर दें. It suddenly stopped. दोबारा share कर दें, please. Okay, एक मिनट hold करें. Stop share. आ गई है? Just a minute. Yes, sir. आ गई, yes, sir. All right. So you can see that. So what we did was a very simple thing. We took the water samples, went to the PCRWR, which is the Pakistan Council for Water Resources. This is the federal government and entity, and we tested all these. And the ones which were fit for drinking, usko green kar diya, jo unfit is red kar diya. So just imagine that by doing little, you have created a source of clean water for the. And then there was a lot of sensitization which were going on. So just look at the results. Massive change and so just one area of clean drinking water which we have done. Similar with immunization, we did the data, we found out who are the children who have not been covered, and we did immunization and look at the numbers of immunization. Right over 98% पे चला गया टंडो मोहम्मद खान 90% हासिलपुर सिंध में देखें 98% पे चला गया सिंध में जो कहते हैं ना नहीं होता इतना ज्यादा look at this data that 98% recovered including polio penta 3 और polio दोनों ये सैनिटेशन का आपको दिखा रहा हूँ क्लीन वाटर बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरें and how people have been able to do that. So you could see the data. 96% safe disposal methods in Hasilpur and 80%. And of course, education. And we're just talking primary education. And this is all government primary schools. इसमें से यहाँ private school ही बंद हो गए हैं. Because अब government के school आ गए और उन्होंने उनको ठीक कर दिया है. ये पहले की और बाद की classes देखें. So these are government schools now which have been sorted out. फिर हमने इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि इसकी इवैल्यूएशन करें तो देव डन एन इवैल्यूएशन ऑफ द बिकॉज हम खुद बात करते तो अलग थी तो WHO came in and they have said that what is it that has happened in water, immunization, sanitation and education. So this project is still going on. So anybody who's interested then they can, and then there were recommendations for the WHO and so I will now take questions because I think I've talked a lot. It was 40 minutes. So if there are any questions, I'll take it. Thank you very much. Sir, we are waiting for the questions from the audience as well. Sir, the first question is that how much have you seen increased in compliance after the WHO's recommendation and guidance? Has the positivity results have been positive so far? Can you speak up louder? Haris? Sir, the first question is that after the advice and guidelines of the WHO, did the compliance of people increase? Has there been positive results been reported so far? So WHO wanted to come in and look at this whole model, the health system strengthening approach, and then to find out what is the burden of disease. So the burden of disease has reduced from a high of 80% to low of about 20%. So the number of people now reporting to the BHUs, so you take the data from BHU, you see how many people are coming in, new patients as well as follow-up patients, and the number of patients which have dropped. So this data is taken, WHO went in and looked at that data, and then they came up with these results for it. So now
the doctors and the paramedic staff there at the BHU are actually waiting for the patient. And there are very few patients. So, and this is the beauty of this whole system strengthening approach, that you reduce the disease to occur rather than treat the disease. So as they call it, prevention is better than cure. So here is the case where you do the prevention part of it rather than going in to do the cure. In any case, if there is a patient and comes to you and very little at a BHU one you can do, you can give him antibiotic, a bit of it, maybe a cough syrup or some paracetamol, and that's all about. But important thing is that if you do this structure, which is prevention, then the level of quality of healthcare improves tremendously. Sir, there's another question by a student, and he asks, you mentioned that the problem has regarding water has now been shifted to many of electrical engineering side. So aren't there institutions that are working in collaboration for both the public health workers as well as the engineering workers? Unfortunately, no. So that's one thing that people here in Pakistan tend to work in silos. मैं अपना काम करूंगा, दूसरे का नहीं देखूंगा। वो इसीलिए तो ये सिस्टम बनता नहीं ना, जिसको सिस्टम स्ट्रेंथनिंग कहते हैं, उसका नहीं बनता। आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली तो होना चाहिए कि हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड लोकल गवर्नमेंट, ये चार डिपार्टमेंट्स अंडर वन मिनिस्ट्री होने चाहिए। फिर ही बात बनेगी ना, फिर उनके नीचे डिफरेंट महकमे होंगे जो कि इकट्ठे काम करेंगे। ये चूंकि नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, तो इसलिए हमें ये जो इसके रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलते। और हमने जो प्रूव किया है वो ये किया है, और WHO ने आके उसको देखा है कि ये काम मुमकिन है, ये हो सकता है अगर चाहे तो। लेकिन क्या ये होगा, दैट्स समथिंग बिग, आई डोंट नो। मेरी लाइफ टाइम में तो शायद ना हो, लेकिन आपकी लाइफ टाइम में शायद हो जाए, आई डोंट। I'm not very optimistic that it will ever happen. Can I take the Sir, last question? yes, sir. There's few more questions, but they are mostly repeated, and they have been answered by you. There's this one question that asks. He is asking that, uh, as you mentioned, that when government schools are now getting better as in terms in as you showed the data. What about provinces such as Balochistan and KPK? Is this being done there as well or not? Not yet, but we are planning to do that, and we are looking for some donor to come in and help us. If we are able to find out this thing, we will. This is our plan, that we have tested this in Sindh and Punjab, and I think the next obvious place is to go into Balochistan and KP, and we have the plans ready for it. We don't need that much of money, but still, I don't want to spend my money. It has to come through the government and others. So we are waiting for it. But as soon as it happens, we will start off there. Inshallah. Anyway, thank you very much. I think, Haris, I need to go. I have to take a flight. As you might have heard, I'm at the airport. So Thank you so much, sir. You have taken time out of your busy schedule and have provided us with very invaluable lessons. We will try our best to implement all your advices, and inshallah, if we get a chance, we will invite you again for future sessions as well, sir. This was quite informative for us, sir. Thank you so much, sir. We are highly thank grateful, you very sir. much. It is a pleasure to have talk to you, and it was my pleasure and thank you very much to have invited me, and to have allowed me to share my experiences with you. Thank you. Khuda Hafiz. Thank you, sir.
All right, everyone. We will now announce the winners at 12 a.m. inshallah. 12 p.m. inshallah.
Okay. We cordially invite Professor Dr. Muhammad Amar Sitara Imtiaz and Hilal Imtiaz, Vice Chancellor, Rawalpindi Medical University, Patron in Chief, Medicos Aid Society, to grace this event with his insights. Dr. Amar's vast expertise and dedication to medical education have earned him a distinguished position in academia. Under his leadership, Rawalpindi Medical University has made significant strides in advancing medical research and education. His vision has been instrumental in fostering an environment of academic excellence and pursuance of innovative ideas. Sir, please, I would like to ask you to say a few words. Uh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hamduhu nusalli ala Rasulihil Kareem. Thank you very much for asking me my comments. I hope you can hear me. Yes, sir, you're perfectly Yes. audible. Okay, fine. Thank you very much. It is indeed an honor and pleasure to be part of this webinars. I think the Medical Aid Society is one of the exemplary society of Rawalpindi Medical University, who is working since its inceptions. I have been the part of this society even in the early days of my junior specialist. Uh, and I think this is doing a noble cause, a noble mission by what I always call the saving human lives and serving the ailing humanity, which is the main mission of any professional or any doctor or nurse. So I think the wonderful job which is done by the medical aid societies that save many lives and decrease the miseries of ailing humanity by supporting them financially, by arranging bloods and medicine and holding different camps. So I congratulate the all the organizers and office bearers who really did a great work and uplifting the standards and work burdens, the workload of the society over the passing times. I think no doctors can be a complete professional unless he is very sympathetic to the patient and doing more than his duty to decrease the misery of us. And we all should be webinar. I think is furthering doing the advocacy, the noble mission the Medical Aid Society is doing. So I congratulate once again and wish a great success to the all the joinees and all the you know uh, organizers of this webinar. Thank you once again and thank you for invitation. Thanks a lot, sir. We are humbled by your such kind words, and we are quite uh, optimistic to do such working in the future as well. Sir, your insights and your supervision is what have allowed us to do this work so far. And your kind supervision under the we have all the activities medical society has been doing is under the name of Medical University and under your supervision, and inshallah we will continue to do so in future as well. Thank you so much, sir, for your for taking time out of your busy schedule.
Assalamu alaikum. My name is Hadi Rahman, Joint Secretary Medical Aid Society. It's time to announce the winners of different competitions. First of all, congratulations to all the participants. Your hard work and dedication are truly commendable. While not everyone can win, your participation is what makes the event meaningful. Let's make sure to announce the winners with the recognition they deserve and celebrate the effort of everyone involved. So, the winner of quiz competition is the team Pies. And the winner of article writing is Majid Shafi from Rawalpindi Medical University. The winner of concept art is Khatija Bakhtawar from University of Miyawali. The winner of poster competition is Muhammad Ibrahim from Rawalpindi Medical University. Okay, now it's time to announce the best ambassadors. Our first best ambassador is Saman Naim from Federal Medical College, and second best is Ibrahim Nasir from Wateem Medical College. Congratulations to everyone, and thank you very much. Thank you so much, Hadi, for making the announcement, and congratulations to all the winners as well as the best ambassadors. Now, as promised, we have the cash prize pool of rupees 30,000 and will be distributed to the winners soon, inshallah. I would request every member, every participant or attendee to remain in their respective groups where the certificates may be shared in a few days' time. We are grateful for everyone who have joined us today. Thank you so much. And uh, let's end this with our motto: live once, live for others. Assalamu alaikum.